دی، اب کہہ رہے ہو وضاحت کی. بھائی آپ سن تو لو، میرے مجھے بات پورے کرنے دیا ہی نہیں نا. جی آپ پہلے بات پوری کر دیں. ہاں، اب وہ جوش خطابت میں جب ان کو کہا گیا کہ تو گالی گلوچ کرتا ہے، اس نے کیا کہا؟ میں سنت پہ عمل پیرا ہوں، سنت پہ عمل کر رہا ہوں. بہت بڑی غلطی ہے یہ. سننے والا سب کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اس کی گرفت کی کہ تم نے بھی یہ کہا. یہ بھی اس نے جو وضاحت کی، گالیاں دے کر مجھے، لیکن انہوں نے جو وضاحت کی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اس نے کہا اسکانی صاحب میں نے یہ کہا ہے، میں جو گالیاں دے رہا ہوں تم جس کو گالی کہتے وہ گالی نہیں ہے، بلکہ میں نے سدھو کو یہ پیغام بھیجا ہے ان کے والدہ کو کہ مجھ سے نکاح کریں. یہ تو گالی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، النکاح من سنتی. لیکن یہ بات بعد میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے قبول ہے. اس کے دل میں یہ بات ہوگی کیونکہ اس نے یہ بات ان کو گالی دی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تیرے والدہ سے، یہ وہ باتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے اس پس منظر میں اس کے دل میں یہ بات ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. اس پس منظر میں اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہو، میں تو سنت پہ عمل پہ رہا ہوں. یعنی میں نے جو پیغام بھیجا ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں اس طرح سے خیانت ہم نہیں کرتے. جو بات آپ کے دل میں یہ بات ہوگی لیکن یہ بات آپ نے کی نہیں، جب آپ کی گرفت میں نے کی تب آپ نے اس کی وضاحت کی. ٹھیک ہے، میں نے اس کے بعد چوچرا بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہی ہوگا، آپ کے دل میں ایسے ہی ہوگا تو تم بھی یہی کرو نا. سیکر سے غلطی ہوئی، یہ بات بھی پیش کرو کہ سیکر نے بھائی توبہ بھی کیا ہے. نہیں کرتا. اب میں صرف وہ بات اس کی پیش نہ کروں جو اس نے وضاحت کی ہے بعد میں، گرفت ہونے پر اس نے جب وضاحت کی ہے اس کو پیش نہ کروں اور یہ کہتا رہوں کہ اس نے جو ہے شاطبیت کی ہے، شاطبیت کی ہے. یہ میری طرف سے خیانت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حالانکہ وہ بات اس نے کی ہے. صرف اسی ٹکڑے کو لے کر میں چلوں کیونکہ وہ تو بعد میں، بہت بعد میں ہوا ہے، اسی نشست میں ہوا ہے، لیکن کچھ 10-15 منٹ کے بعد ہوا ہے. کم از کم 10 منٹ کے بعد اس نے وضاحت کی ہے تو میں اس کو بیان نہ کروں. اور پیسہ ایک منٹ. پیسہ یہ عثمان صاحب آپ نیچے لکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے عثمان صاحب آپ پھر بعد میں لوگوں کو پرائیویٹ میسج کر کے دھمکیاں بھی دیتے ہیں. آپ اوپر آ جائیں، دیکھیں اب وہ مسلمان ہے ہمارا، اس نے کہہ دیا نہیں نکاح کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح بھیجنا یا جو بھی ہے. پیر صاحب میں تو اس ٹائم موجود نہیں تھا، لیکن پیر صاحب آپس کی بات ہے. ویسے یہ شارپ شوٹر ہے نا. دیکھیں جو بھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ نام آئے نا، انسان ویسے ادب سے بولتا ہی نہیں ہے یا ایسے. کہ ایک دفعہ پہلے مجھے یاد ہے نیا میں ابھی ٹک ٹاک پہ آیا تھا تو ملک کیسر صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا، شاید یہ جو گینڈا نیچے بیٹھا ہوا ہے اس نے آ کے گالیاں دیں تو ملک کیسر نے بھی کوئی ایسی بات کر دی. ایک منٹ پیسہ یار علی صاحب بھائی آدھے میں وہ بدتمیزی نہیں کی تھی. بھائی آپ اوپر بھائی امن نذیر کرنا عزت کرنا. عامر بھائی زندہ باد. عامر بھائی 10,000 عامر بھائی $10,000 دیں گے تو ایک پیر صاحب 600 بھی دیں گے. میں تو خوش ہوں. میں تو بڑا یار پیسہ میں میوٹ کر رہا ہوں. یہ بدتمیز بندہ آ گیا، میں میوٹ کر رہا ہوں. میں تنوں دھمکی پہ دینا ادو تماش بھی نہیں کی نا. تیرے پیو میں تو ٹانگ سا میری گل سی بات نہیں. تینوں پتا بھی ہے تیرے پیو کی فوٹو میرے کو بولتا نہ بدنام کرائی. آپ سرکار نے فرمایا سی نا کہ کچھ بندے ہوتے جی اپنے ماں پیو کو گالا پوا تیرا نام شامل ہوتا ہے. تم سمجھ لیں. پیر اسکانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. ٹاک ماسٹر صاحب آپ زندہ ہیں، موجود ہیں؟ جی ابھی تک تو زندہ بھی ہوں اور موجود بھی ہوں. اچھا، اللہ میاں آپ کو صحت تندرستی دے، زندہ رکھے، خوش رہے، آباد رہے. السلام علیکم. وعلیکم. بس ہاں جی، میں صرف آپ کو سلام بیک کرنے آیا تھا. آج کوئی چنگیزی نہیں دکھانی پیر صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ؟ نہیں کوئی نہیں. پیر صاحب سے زیادہ پیار کی باتیں نہ کیا کریں کیونکہ جو لوگ ان سے پیار کی باتیں کرتے ہیں وہ اگلے دن ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں پپو صاحب، اب آپ نے بات سن لی نا
کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، بالکل گستاخی ہے، شاطمیت ہے، لیکن جب میں نے ان کو گروپ کی ملک رشتہ دے رہا ہے کیا 10,000 رقم مہر کے عوض؟ بھائی میں تو رشتہ نہیں دے رہا، آمن نذیر صاحب سے یا پیر صاحب سے پوچھ لو کیا ان کا ایک دوسرے سے رشتہ ہو رہا تھا، یا یہ ایک دوسرے کو رشتہ دے رہے تھے جو 10,000 عامر صاحب نے للکار کہ ہاں جی میں 10,000 دوں گا؟ بھائی آمن نذیر اور پیر صاحب کا مدعا ہے رشتہ نہ میں دے رہا ہوں نہ میں لے رہا ہوں، آپ جانو۔ لیکن آمن نذیر صاحب ایسے شکنجے میں پھنس گئے ہیں نا کہ آپ جو ان کے پجاری ہیں نا اب تڑپو گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ صبر کرو، دیکھو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ نہیں، دیکھیں جو بات ایک بھلے مانس انسان نے کی تھی تو ہم نے نہ مطالبہ کیا تھا اور نہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ انہوں نے خود کہا آپ سے اور مسعود بھائی سے اور کیا نام ہے ان کا احمد سلطان سے کہ بھائی آپ جائیں ان لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ جو آڈیو ہے آپ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ اس کو لیک نہ کرو، اس کو ڈیلیٹ کر دو، وہ مارکیٹ میں نہیں آنا چاہیے، ڈیلیٹ ہو جائے، اس کے بدلے میں ہم $10,000 دینے کے لیے تیار ہیں۔ احمد سلطان نے 2-3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، کہا بلے ماس انسان صاحب ہم تو یہ عمل کریں گے، میں صلاح صفائی کی کوشش کروں گا، جا کر ان کو کہوں گا، میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا یہ وعدہ آپ کرتے ہیں اگر وہ مان گئے پیسے دیں گے؟ کہا میرا وعدہ ہے دے دوں گا۔ تب وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور جب انہوں نے بات کی ہے تب عمر اباب صاحبہ نے یہ بتایا کہ ہاں بالکل ہمیں قبول ہے، آپ جو ہے $10,000 پیر آسکانی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے اور یہ وعدہ ہے کہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اچھا، جب انہوں نے میرے حوالے کر دیا تب میں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ بات کر رہے تھے وہ بلے مانس انسان، اس وقت میں نے جب ان کو ڈیوائیڈ کیا دیکھا، میں نے دیکھا ایک عجیب سا رقم آ رہا ہے، 420 ملین ریال، 420۔ دل میں سوچا بڑی اچھی رقم ہے میرے بھائی، بیٹے بیٹے مل رہا ہے، تو میں نے کہا اب دے دو۔ اب یہ اگر پسپائی اختیار کر رہے ہیں تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور یہ رہتی دنیا تک جو احمدی ہیں وہ اس بلے مانس انسان کو درے مارتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے بغیر کسی شروط کے، بغیر کسی مطالبہ کے، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ اب وہ ہم کریں نہ کریں، یہ 1122 ہے، یہ جو نرتکیاں ہیں، یہ جو احمد جٹ ہے، یہ جو ایک اور ہے وہ کیا نام ہے ان کا، کچھ ہیں احمدی، وہ تو رہتی دنیا تک یہ تاریخ بنی رہے گی کہ ایک بلے مانس انسان نے اس طرح سے پیسہ دینے کا وعدہ کیا، خود سے کیا، کیونکہ وہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، لیکن بعد میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا نشانی کس کی ہے؟ منافق کی ہے۔ اور وہ کیا کیا کہیں گے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ وہ مردے بھی کام جائیں گے، اتنی ذلت بنائیں گے بلے مانس انسان کی۔ میں تو پھر بھی ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اب آپ بنتا نہیں کہ آپ جو ہے اس کو پورا نہ کرو، یا آپ ہمیشہ کے کہا کہ لیے میں رخصوص پورا ہو نہیں جاؤ۔ کرتا، جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پورا نہیں کرنا، وہ تو ابھی قائم ہے اپنے وعدے پر۔ تو ٹھیک ہے، وہ دے دینا، قائم کا کیا فائدہ؟ قائم تو وہ آپ کا وہ سلیم میر ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ایک ضعیف انسان ہے، کیا نام ہے اس کا، لطیف، لطیف، میر لطیف بھی قائم ہے، تو اس کی کتنی ذلت بن رہی ہے؟ قائم اگر وہ ایسے ہی ہے وہ بلے ماس انسان۔ دیکھیں آپ ابھی ذلت پہ نہ آئیں، مجھے امید ہے ملک عمران بھائی بڑے غیرت مند ہیں، ویسے تو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے، غیرت مند اتنے ہیں ان کے اپنے سگے رشتہ دار سستے علاج کے چکروں میں احمدیوں کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں، لیکن امید ہے آج اس نے ببانگ دہل کہا ہے کہ میں $10,000 دے دوں گا اگر ضرورت پڑی تو ملک ضرورت کیسے عمران پڑی؟ بڑے بڑے امیر بندے ہیں، بھائی جان ضرورت کی کیا بات ہے؟ کوئی شروط ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ کیا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا،
बात ये था कि हम पैसा दे देंगे, उसको डिलीट किया जाए। मेरा वादा है कि उसको डिलीट कर दिया जाएगा और पैसे हमें मिलने चाहिए। नहीं पीसा बात ये है, अगर मतलब इमरान या ये अबू बकर मीर या यूसुफी वगैरह आके ना कर गए, माफी शाफी मांगे, कोई ये जोश में अमर भाई ने बोल दिया था, तो क्या आपको माफी दे सकते हैं आप या नहीं? देखिए, अगर आमिर नजीर नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, भले मानस इंसान नाम नहीं लूंगा, तो भले मानस इंसान से मुझे मोहब्बत है दिल में। जुबान में जितना भी कड़वाहट हो, दिल में नरमी है। बड़ा मुनाफिक दिल है आपका जी, बड़ा मुनाफिक यार दिल। ताक मकसद साहब, बड़ी जरूरी बात हो रही है, मुझे सुने जी पीर साहब, आगे क्या हो? नहीं, मेरा अल्लाह जानता है ना। पीर साहब वही बात पर- मोहब्बत तो मुझे भी है पीर साहब, मैं कई दफा कहता हूँ इज्जत है, मोहब्बत अब है। मेरी बात को खराब ना कीजिए। इस बात पे इंशाल्लाह अल्लाह गवाह है मेरा कि दिल में मोहब्बत है। ठीक है, अगर वो ये कहते हैं तो मेरी जुबान पे ये बात ही नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन मतलब ये कि मेरे उनको माफ करने से क्या आप लोग वादा करते हो कि उनकी जिल्लत नहीं करोगे? मुझे तो डर उस बात का है। पीर साहब आप अगर माफ कर देंगे, मैं तो वादा करता हूँ, मैं दोबारा नाम ही नहीं लूंगा, क्योंकि मुद्दा ही तो आप हैं। बीच में तो चलो 600-700 तो मेरा भी निकल आएगा, और भागते चोर अब आपसे एक सवाल, एक बात करनी है प्लीज। और भाई आप एक में कह रहे ना, आपका सवाल ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमारे दो मुसलमानों का, हमारे जो बड़े आलम हैं उनका आपस में नहीं, मेरा बड़ा शरीयत मसला, के बड़ा मुताबिक मसला सवाल है और बड़ा है। जरूरी है मेरे भाई पप्पू भाई, मेरा जरूरी सवाल है। चलो तो कर लो भाई, आप कर लो, मैं म्यूट कर पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब, एक मसला है, एक मैं अभी ब्रॉड सुन के आया हूँ, वहाँ एक बात हो रही थी, क्या किसी औरत जो दूसरी किसी के निकाह में हो उससे निकाह का पैगाम भेजना या शरीयत के मुताबिक या सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक कुछ है ऐसा दीन में, हमारे इस्लाम में? देखिए, ये बात ऐसा तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है कि किसी के बंधन में हो, किसी के हुस्न में हो ये काम करे। ये तो ऐसा है नहीं ना। जी। तो ये जो शार्प शूटर बकवास कर रहा है फिर, तो ये तो गुस्ताखी नहीं कर रहा, गुनाह नहीं कर रहा? भाई वो तो उसके अकल घुटने में है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसका अकल ही घुटने में है। पैसा बेच यार, मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो एडी ग्रुप है, चाहे कोई और फिरका है। पप्पू चुप कर जा, पप्पू सुन लो यार, मुसलमान पे गुस्ताखी का फतवा ना लगाओ, उसने गलती में एक बात बोल दी, उसने माजरत कर दी, अब छोड़ दो। बड़े फिर मैं कहूँगा गंदे बाबों के गंदे पुजारियों, गुस्ताखी की तरफ मुसलमान गुस्ताखी नहीं कर सकता। शार्प शूटर ने अगर कोई गलत बात की है, उसने माजरत कर दी है। क्या माजरत की है? क्या माजरत की है? तुम्हारे पास है प्रूफ? जो पीर साहब कह रहे हैं उसने माजरत कर दी है, अपने बात किसने पेश कर दिया, दलील खत्म होगी बात। अब क्या चाहते हैं तुम, वो ना के निकाले? नहीं, वो किसी मुसलमान को फतवे लगाता रहे, मुसलमानों पे गालिम गलोच करता रहे, वो सही कर रहे नहीं, जो तुम्हारे बाबे मिंबरे रसूल पे बैठ के गालियां देते हैं, क्या वो इस्लाम की वो नहीं है? बकवास नहीं कर, बकवास नहीं कर तू। नहीं, खादम रिजवी मेरा फिर मेरा पता ना तेनू, मस्जिद के फिर मैं मीनार पे मनारा, खड़े जब मैं होके- मनारा दिखाना फिर तू नसना, फिर तू कहना नहीं, पप्पू मस्जिद मनारा, के नहीं, फिर खादम तू मनारा रिजवी की दिखाना बात ना, है, फिर मुझे तू बता दो, टपना, खादम रिजवी का बेटा जमीन गाली तो बात 2 नहीं फुट है। उत्ते टपना, तेनू पता नहीं नहीं, मेरा? तुम मुझे बताओ TLP तेनू का मेरा करंट पता ना, मुझे- फिर बाबे वाला जेड़ा मनारा तेनू तो बखाया, यार मुझे बताओ, वो मीनारा भूल गया ना शनारा तेनू? छोड़ो, मैं फिर बताऊं तू तुम्हारे बाबे फिर नाल ही तू गालियां भांडे दें, तोड़ना हंस जाना, फिर तू तुम्हारे अपने बाबे भांडे गालियां तोड़े, दें, हुण कोई शख्सियत मेरे नहीं। अगर जी, मुसलमान उस्मान यहाँ भाई। पे एक जोश में आके कोई अब बस बदतमीजी करना, करे- तेरे से मेरी बात की है कोई? नहीं, तेरा तो मुझे तेरा बताओ, मुझे खादम बीच में रिजवी ने टांग कभी बताता माफी मांगी है, तेरे से वजाहत बात की की है है मैंने, कि तूने मैंने माफी दी भाभियों है? को सूरों का सूर तूने क्यों बताया मिला है? मुझे? तूने मुझे प्रूफ दिया उसका कि फुप्पी का बेटा है तुम्हारा? वो बकवास भाई, कर मैं रहा कहता पिछले हूं, एक किसी हफ्ते से। मुसलमान पे इल्जाम ना ये फुप्पी लगाओ। का बेटा तुम्हारा, तुम भाई- जाके उसकी गोद में बैठ गए। अब भाई देखो, कोई भी मुसलमान है, कोई भाई, शख्स- मैंने जो सवाल किया मैंने पीर साहब से किया, आपसे मैंने नहीं किया। आपको बीच नहीं, में तो तुम मामे बिला वजह लगते हो, तकलीफ होना तुम शुरू हो मामे जाती लगते है, हो, आगे फिर वो बाबलों पे मुंह चढ़ पे जाते आगे हो, हो। कभी किसी के तुझे ज्यादा मुझे शौक है बताओ, चढ़ने में, खादम मीनारे रिजवी पे चढ़ गालीबाज जाके थे जो या नहीं तुम्हारी थे? असल मैं पैदाइश तो अल्लाह उनकी बख्शिश करे। फिर मेरे मुंह से कुछ सुनेगा तू? खादिम रिजवी ने बिला जो वजह गालियां फजूल में दी बीच हैं, में तू वो टांग अड़ाता है। TLP वालों, जो मेरा गालियां सवाल था क्यों वो देते हो? सवाल का मैंने पीर साहब से पूछा, आपसे मैंने नहीं पूछा। एड्डा तू आलम पीर रहन साहब दे ने बना, मेरा- तेनू तो आलम आलम की नहीं गाली पता का- तू है कौन। भाई आलम की गाली का ज्यादा गुनाह होगा या एक जाहिल की तेरी गाली इन्नी का? औकात है, जिथों तेनू गाला पै, जिथों तेनू तेना कुत्ते वाली हुंदी उधर नस के दोबारा भाई उधर ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, मांगदा ਕੁੱਤੇ फोन ਹੱਥ करके। TikTok ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ तो ਦੀ जिथे मर्जी मैं वेखा तू ते ਇੰਨੀ तू ਤੇ देख ਮੁੰਨੀ मैनू ਬਦਨਾਮ लोग ਨਹੀਂ बाबियां ਹੋਈ, नू वेखण ਇੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੰਨੀ बाबियां ਬਦਨਾਮ तू ਨਹੀਂ ਹੋਈ, बाबियां दा वेख नाले बाबियां नू भी शिव वेख, सरकार बदनाम हो तू गया है। बाबियां दा वेख नाले बाबियां नू भी मैं वेख। कहना तेरी मुन्नी तू जाके बदनाम भांडे नहीं धो, जेड़ा होई, तेरा काम आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ तेरा ਬੰਨੀ ਸੀ भांडे ਨਾ, धोण मुन्नी वाला
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ ਨੱਸ ਕੇ। ਉਮਰ ਪੂਜਿਓ ਨੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ गलत हो गया, चलो ठीक है, उस बाबे ने अच्छा, गलत ठीक करता, है। मनारा अभी बखाता, थोड़ा सा मुझे मौका दे दीजिए, ठीक है? जी हो जी गया, पीर साहब, जी जी पीर साहब। हो गया। देखिए, पहली बात यह है कि किसी खातून जो किसी के बंधन में है उसको निकाह का पैगाम देना नाजायज़ और शरीयत के रूप से हराम है। आप ज़रा दलील देखें। जब आप पढ़ेंगे सूरत अल-बक़रा, वहाँ पर आया वला तुअज़िमुन उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु। तर्जुमा इसका यह है कि निकाह के इरादा ना करो यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। अब ये देखिए, आप कहते हैं ये किस तरह की दलील है? देखिए ये क्या दलील है। निकाह के पैगाम किसी को ना दो, ना उसका इरादा रखो यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। यानी कोई खातून है, शादी है, लेकिन शौहर वफात पा गया, अब एक इद्दत है, इद्दत पूरी हो जाएगी तब इरादा रखो, तब पैगाम भेजो, उसके अंदर आप भेज नहीं सकते। इससे क्या मालूम हुआ कि इद्दत में भी निकाह का पैगाम देना नाजायज और हराम है। तो कुजा एक औरत मर्द जिंदा है, आप भेज रहे हैं। आप समझे मेरी बात को, इसको या नहीं समझे? जी 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 पीर साहब, बिल्कुल समझा। पीर साहब, उसने सुन्नत का कहा है, ये सुन्नत कहाँ से आ गई जी? अब देखिए, यही बात समझ नहीं आई मेरी बात में, मतलब उसने तो गुनाह नहीं किया, कुफर नहीं किया। एक और बात, जी जी बुखारी मुस्लिम की हदीस है जिसमें यह है कि मोमिन अपने भाई के जो सौदे पर खरीद फरोख्त है ना, सौदे पर सौदा ना करे, जी बिल्कुल, और ना ही उसके निकाह पर निकाह का पैगाम दे। समझ रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। यानी जिस औरत का निकाह किसी मर्द के साथ कायम हो उसको पैगाम देना गुनाह है, जायज नहीं है, हराम है, बिल्कुल हराम। इसको सुन्नत नहीं कहते। लेकिन उन्होंने जो बात की ये तो हमें मालूम ही नहीं, वो तो वो जाने बेहतर। उन्होंने क्या कहा, जब सिद्धू ने उनसे पूछा कि तुम जो है गाली गलौज करते हो, कहा मैं गाली नहीं देता बल्कि मैं सुन्नत पे अमल पेरा हूं। मैंने उनको उसी टाइम पर उनसे कहा कि तुमने भाई ये गलत बात की, तुमने अगर के साथ एक मिनट पीर साहब, उन्होंने सिद्धू को नहीं, मुझे इनबॉक्स में मुझे बहुत व्हाट्सएप पे बहुत दफा ये अल्फाज दोहराए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या मैं बोलूं, वो ज़हनी तवाज़ुन उसका नहीं है, वो पागल हो चुका है ना, मेंटली तौर पे वो बंदा खिसका हुआ है। यही बातें जो सिद्धू को कहीं सेम, मुझे कहीं तो बस वो क्या कहते हैं, एक मुसलमान वो एक शरीफ इंसान आगे से यही कह सकता है अल्लाह तुम पे रहम करे, बस यही बात है ना। बिल्कुल, वो फिर ऐसी गली जुबान ऐसी जी जी। अच्छा सुन लीजिए, भी आप शरीफ इंसान नहीं हो, भी कह दो ना, शरीफ बनो, कह दो अल्लाह उस पर रहम करे, मुद्दे पे आओ। हमारे यहाँ पे $10,000 फंसे हुए हैं, आपको शार्प शूटर याद आ गया बीच में। यार अभी आपकी शराफत किधर गई है? तू चुप करके बहना के नहीं बहना, गालो नहीं, अभी शरीफ इंसान बनो भाई, उसने गालियां मुझे भी जो देखा है, बात उसने की है गलत की है, लेकिन मैं 2 नंबर ही नहीं करूंगा। तेनू क्यों समझ नहीं आ रही, झूठे मुकदमे गुनाह में कर रहा, फंसा कुफर दूं। कर रहा, तेनू पैसिਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆ, फिर समझ नहीं आ रही तेनू। If you have money, you can buy honey. या सो बात यह है कि बात उन्होंने गलत की है, वो शातमियत ही में आता है। लेकिन उन्होंने जो वजाहत की कि मैं शादी का पैगाम भेज रहा हूँ, अगर वाक़तन कोई मुतल्लका है और उसको शादी का पैगाम भेज रहे हैं, वो तो या कोई बेवा है, इद्दत के बाद की बात है ना, अगर कोई मुतल्लका है और इद्दत पूरी हो चुकी है उसके बाद जायज अमल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तब तो ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही है, वो शादी का पैगाम इंसान भेजता है। लेकिन यहाँ तो लड़ाई है ना, वो कहते तेरे माँ से शादी करूंगा, ये करूंगा, ये तो लड़ाई कर रहा है, ये तो गुनाह कर रहा है। ये कोई जो है किसी से ये किसको कह रहा है, सुन्नत, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या जिससे लड़ाई करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको ये कहते थे, ये कहते मैं सुन्नत पे अमल पे रहा हूँ, तब भी वो झूठ होगी। लेकिन हो सकता है उनकी जहालत है, इससे वो दलील इस्तदलाल कर रहा है, कशीद कर रहा है, इससे ये उसकी जहालत है। ऐसा है नहीं, जिस माज़रत के साथ जिस तरह हमारे वो भले मानस इंसान ने ये कहा कि कपड़ों को उतारना औरतों के हजरत अली की सुन्नत है, वो भी जहालत थी। ये इस तरह की बात है वो कर रहा है।
और कुछ जी जी, थैंक यू सो मच पीर साहब। बस मैंने ये पूछना था क्योंकि मुझे वो पिछले कुछ 1.5 हफ्ता 10 दिन से मुझे भी यही, मैं भी उसकी ब्रॉड पे तो ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार मैं कम से कम पीर साहब से पूछ लूं, वो कम से जी कम भाई बता तो देंगे देखिए, ना। सिर्फ शार्प शूटर नहीं, यहाँ पे जितने भी ज्यादातर बाबों के पुजारी है ना, सब गालीबाज हैं। आप गालीबाज नहीं हो। अभी ये जो आपने पीर लफज साहब आप अल्फाज मुझे यूज- प्लीज 2 मिनट देना, नहीं मैं जरा पप्पू पीर को ना साहब मुझे ये मनारा बताएं, ये और गाली पप्पू नहीं को मैं है। बताऊं। अच्छा पप्पू बात सुन, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे आप ठीक गालीबाज है, नहीं हो। तेरे साथ बाबे ने कुछ गलत किया, तुझे हाँ तो बाबे ने ये कहा गाली नहीं कुछ है। किया कुछ, अब नहीं, तुझे इसका उस मतलब ये है कि उस तुम्हारे दिन की बाबे, तकलीफ आज दिन भाई तक तुझे भूल नहीं रही। इसका अब मतलब इसमें है हमारा तुम्हारे कसूर जो क्या है? गलीज बाबे हैं वो तुझसे बाबे ने तेरे साथ कह दिया, उसने तुझे पीर बाबा साहब, दिखा के बाबा ही देखिए बखा ये दिया देखिए पीर है। साहब, ये गाली बाबा नहीं है। कह के बाबा बखाता हूं, पीर दस साहब तुझे की एक करिए। गालीबाज दूसरे को नहीं हूं गालीबाज तेन नहीं दस कह रहा की है। करिए, तेन वो तकलीफ तेरी किवें खत्म होएगी? अच्छा और वो जो बाबे को बाबा था जाके कौन सा बाबा था, मुझे एक बताओ मिनट गल कौन सुन, सा, उस बाबे का तुम्हारा नाम कौन दस, सा असी बड़ा ਉਹਨੂੰ बाबा ਉਹਦੀ था मिन्नत जिसने अल्लाह मेरे साथ करदा। जाती की थी, मुझे बताओ कौन सा बाबा था वो, बता दो नहीं मुझे, तू दस दे, तू बाबियां बाबे करदा ना, तेनू हुण तू नहीं दसेगा, मैं मैं तो तो नहीं नहीं कह रहा दसांगा। कि बाबे ने मेरे साथ जाती की है, आप हाँ ही तो कह रहे होर हो तू भाई। बाबियां दी तकलीफ तो तेनू तां वा कि बाबे तेनू किसे बाबे ने तेनू टाफी दे के या मरूंडा खवा के तेनू यानी इसका मतलब है मनारा तेरे विखा ਤੁਹਾਡੇ 2 छड्या, नंबर बाबे है काम करते तो रहे नहीं। मनारा फड़ा छड्या तेनू, मनारा कह के आ नहीं मनारे वाला नहीं, मरूंडा। आपका मतलब है कि आपके बाबे ये काम करते नहीं हैं। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब जेड़ा वा तेनू समझ भी आ गई, और तू बाबियां दे उत्तों बाबे दे उत्तों अच्छा नहीं नचदा, बाबे मरूंडा दा पता नहीं मरूंडा की मेरे मसला पास तेरा। भी पड़ा हुआ है, मरूंडा इस वक्त मेरे पास भी पड़ा हुआ अकबर खान साहब, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਪਤਾ अच्छा ਨਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੂੰਡਾ ਸ਼ਰੂੰਡਾ ਟਟਾਫੀਆਂ रंग बिरंगियां। है। हाँ, टाफियां भी हैं मेरे पास, मरूंडा भी है। चलो जी, बड़ी मेहरबानी, सॉरी गच्चक इस्तानी गच्चक भी भाई। पड़ी है, गच्चक ना भी, ये सब इंग्लैंड के अंदर ना एक बाबू का मानने वाला ना, आलम हमारा, मुल्ला हमारा, मौलवी हमारा पकड़ा गया, बच्चों के साथ जाति करता था, 10 साल उसको कैद हो गई है। पीर साहब, अकबर खान साहब आपको शायद पता होगा, पीर साहब ये जो बाबों के पुजारी है ना, दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, हमारा मुंह काला ही कराएंगे। अच्छा सुन ले भाई, उधर ये काम अब बात बहुत ये ज्यादा है, है, बहुत ज्यादा है। वो अब बात यह है भी पप्पू लगे साहब हुए मेरी हैं बात सुन। उधर, कसरे मिर्जाइयों के कसरे खबासत में भी वो आमिर भाई लगे हुए हैं, डॉक्टर मुबशर लगा हुआ है, वो सारे अब लगे मेरी हुए हैं, और मिर्जा मसरूर का साला भी लगा हुआ है। कच्चे के डाकू कहीं का, मर्जई भी जलील हो रहे हैं, कच्चे के मर्जई डाकू भी कहीं का। रुसवा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शरीयत रसूल पाक, वालेकुम सलाम भाई मसूद, की हाल है? बस ठीक ठाक है अकबर साहब। एक बंदा ਪਿਓ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜਨ ਲਈ। जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤ ਲਿਖਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹੇ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਕਿ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਏ ਨੋ ਮਨੀ, ਅੱਬਾ ਡੀਅਰ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਨੋ ਮਨੀ ਨੋ ਹਨੀ ਯੋਰ ਸਨੀ। हाय। ਤੇ ਪਿਓ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਸੋ ਸੈਡ, योर डैड। हाय। कोई पैसा नहीं। सही होने क्या? क्यों जी तो भाइयों, मुझे याद आ गया। अच्छा भाइयों देखें, बात यह है कि गमगीन जो मसला है वो ये है, पप्पू साहब देखें, आपने मुझसे जो सवाल किया था कि अगर वो माजरत कर लें आप छोड़ देंगे, भाईजान मैं अगर छोड़ भी दूंगा 1122 जो वो नेवले की तरह बैठा हुआ है कि भले मांस की तरफ से कुछ भी कुंडा मिल जाए, इतना बड़ा घाट अगर मिलेगा वो छोड़ेंगे? जब तक जिंदा हैं, बल्कि वो अपने नस्लों को भी यही कहेंगे कि ये बात है, ये रिकॉर्डिंग है, इस पे कोसते रहो और इस पे कोसते रहो। हाँ, उस वक्त शायद छोड़ देंगे जब अहमदियत को छोड़ दें। तो ये उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा जो है वो आप समझ लीजिएगा कि एक काई है। अब उसको मैं नहीं चाहता कि वो गिर जाए, इतना जरूर है कि वो मुझे बेच पीर दें। साहब एक काम करते हैं ना पीर साहब, लेने देने वाली बात करते हैं। मैं कहता हूँ आमिर भाई को 10,000 की जगह 1,000 पाउंड दे दें आपको, ठीक है, तो आप भी खुश, आमन नजीर भी खुश, और मामला रफा दफा हो जाएगा। या फिर वही जो डील होती है 2 नंबर डील, दोनों बार एक दूसरे से फोन पे बात कर लें, नहीं जाके कह देखिए, मैं दें खुला खुला आमन कहता नजीर हूं, ने मैं- हमारा मेरी बात राजीनामा सुनो। हो गया, हमने माफ कर दिए। जब मेरी हमारा हो बात जाएगा सुनो पीर साहब का दिन को क्या तकलीफ है पीर साहब, मुसलमान जाने का भाईजान, काम मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं साफ बात करता हूं। उन्होंने जो वादा किया है उसमें वो खयानत ना करें, वो मुझे पैसे दे दें।
उसके बाद मेरी मर्जी है, हो सकता है मैं उसमें कुछ डाल के वापस दे दूं, हो सकता है पूरे वही दे दूं, हो सकता है ना दे दूं, वो तो मुझ पर है, वो मेरे और उसके दरमियान होगी। आप समझ रहे? वो तो ना आपको उससे कोई लेना देना है ना किसी और को, लेकिन दुनिया को तो ये और पीर साहब ये इतने बेशरम लोग हैं, आप अगर समझ रहे हैं आपको स्ट्रेट में 10,000 मिल जाएगा, नहीं, इन्होंने तो माओ बहनों की गालियां इतनी मलक तलत से खाई, 3 दिन गालियां खाई। तो फिर ज़ाहिर है मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार कितने के मुसलमानों को गालियां पड़ेंगी, तो मैंने 500 यूरो दे दिए। लेकिन इनकी गैरत नहीं थी जागी पीर साहब, आप तो गालियां नहीं दोगे इनको, आप मैं कहता हूँ 3 साल भी रोते रहो ना इस तरह, ठीक है, 3 साल भी, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये बात याद रखें। वो उन्होंने जोश ताबत में कह दिया, लेकिन अब वो फंस गए हैं, उनकी गर्दन में सरिया है, वो माफी नहीं मांगेंगे, माजरत नहीं करेंगे, हाँ यार सॉरी मैं जोश में बोल गया था, मैं मतलब ये नहीं था, चल पीर साहब जान दियो, ये आपको वो कभी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि गुरूर के जो बुत है ना, सोमनाथ का बुत जो गुरूर है। जी पीर साहब, ये फायदा नहीं है ना, ये माफी का फायदा ही नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम है। 1 मिनट दे दीजिए भाई। माफी का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो माफी मांग भी लें, कादियानी जान नहीं छोड़ेंगे। उस जिल्लत से बचने के लिए, और पीर साहब का अल्लाह माफ करे, मेरी बात सुनिए, कादियानी को क्या औकात है? पीर साहब 2 नंबर लोग हैं सारे, ज्यादातर यहाँ पे बैठे हुए, इतने बेशरम लोग हैं। मलक तलत ने जो मुसलमानों के साथ किया है, इनकी गैरत किधर मरी हुई थी कि मलक तलत को बोले कि अब तू हार गया, वकील जज ने डिसीजन दे दिया, तू वापस दे। तो पीर साहब हमारे आगे ये क्या बोलेंगे बेचारे? हम आप मुसलमानों की बात करें, कादियानी को छोड़ें जनाब। नहीं पीर साहब 1 मिनट। सबसे पहली बात तो ये है कि किसने बोला है माफी मांगने के लिए? ठीक है, हमने तो ये नहीं बोला, हम तो पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं देने के लिए। तो दे दो ना भाईजान। तो भाई हमें कोई ये जो बगैरती कर रहा है इधर बैठ के, इसने आपको पूरी बात नहीं बताई? भाई मेरी बात तो सुनिए। नहीं, ये जो आके इधर 2 नंबरी बात कर रहा है, उधर 2 नंबर, उधर कुछ और बात करके आया है, इधर कुछ और बात कर रहा है। मेरी अमर भाई से कल बात ही नहीं हुई, मैं चला गया था, अमर भाई ने मेरे से पूरी बात ही नहीं की। क्या हो गया है? कौन सी 2 नंबरी? हक भाई मेरी बात सुन लीजिए। भाई हम तो देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो दे दो ना भाईजान। ओ तो भाई हमें भी कोई सबूत दो ना, कोई प्रूफ दो, कोई अपना। ओए चुप कर, ओए चुप कर। ईरान दूर है, ईरान पीर साहब इसको चुप करवाना है कि मैं जाऊं इधर से? इसको चुप करवाएं पीर साहब। यूके का अकाउंट नंबर 1 मिनट जरा मुझे दे दीजिए। कौन फोन कर रहा है? हाँ कोई और। देखें अली हक भाई, जो हमारे भलेमानस इंसान ने कहा था सुल्तान को, देखें आप लोग ज्यादा मतलब तो पीर साहब हमने सुल्तान को बताया है ना, सुल्तान का, आप सुल्तान की बात तो सुन लें पहले पूरी। आप इधर बैठ के फलसफे नाना दें, फतवे नाना झाड़े आप। भाई गुस्सा ना कर लें। नहीं गुस्सा नहीं मैं कर रहा, मैं हक की बात कर रहा हूँ। तो सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए। आप बात नहीं ना सुन रहे, आप बात तो सुन लेना पहले। हम तो पैसे देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं मेरे प्यारे भाई। करें बात। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, कुछ हमें भी तो जमानत दें कि वो आज हम देंगे, अगले महीने फिर देंगे, परसों महीने फिर देंगे, 1 साल बाद फिर देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप वो आइडियो और वीडियो लीक नहीं करेंगे? जबकि वो मर्जियों को तो पहले ही पहुंच गई हुई है। शेख आदि ने कल कमेंट किया है कि वो आइडियो और वीडियो मेरे पास पहुंच चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिनते हवा है, उसने भी अफजल वड़ैच की ब्रॉड पे बैठ के कहा है कि मेरे पास भी ऑडियो है। जब आप कह रहे हैं कि हम लीक नहीं करेंगे, तो ये किधर से आ गई ऑडियो और वीडियो उन लोगों के पास? जब आप अपना कोई जमानती दें, ठीक है, कि भाई वो आपकी जमानत दे, कोई मुसलमान दे, ठीक है। क्या सुन रहे हैं पीर साहब? यार पीर साहब इसको खामोश करवाना है कि नहीं करवाना? अगर ये वाकई सच है तो आप तो पहले ही वड़ गया है, तो आप पीछे पे रह क्या गया पीर साहब? बात होने दे पप्पू भाई, बात नहीं होने टाइम के साथ तो चले आप बात करने जी करें, पूरी करें अपनी बात। यार अपना पीर साहब, हम ये कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी जमानत दें, ठीक है, कि भाई हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं कि वो ऑडियो जो है वो क़यामत के दिन तक बाहर नहीं आएगी। लेकिन मसला ये है कि आपके ऊपर या
وہ جو میڈم ہیں جنہوں نے یہ بہتان کھڑا کیا ہے ان کے اوپر ان کی ضمانت دے گا کون اس ٹک ٹاک کے اوپر؟ آپ ضمانت کا پیٹرن بتا دیں کہ کیا ضمانت چاہیے. ایک منٹ ماسٹر جی پلیز. جی مکمل کریں اپنی بات. ہاں جی ہو گئی میری بات مکمل، کریں بات آپ. بہت شکریہ. سب سے پہلی بھائی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لڑائی کے بعد مکہ اگر یاد آ جائے تو اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. انشاءاللہ اس کا مطلب وہ بہتر آپ کو بتائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسری بات، جب انہوں نے یہ بات کی ہے کوئی شروط انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ وہ فریاد یہ کر رہے تھے کہ ہم بغیر کسی شرط کے، آپ اس سے بہتر بات نہیں کر سکتے، آپ اس سے زیادہ چالاک بھی نہیں ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کے الفاظ ابھی بھی ریکارڈنگ ہیں، موجود ہیں. وہ بلے مانس انسان کا کہنا یہ تھا، مسعود صاحب کو کہا، فریاد کی کہ آپ برج کا کام کریں، آپ جائیں ان کو کہیں کہ وہ آڈیو ڈیلیٹ کر دو، ہم $10,000 دینے کے لیے تیار. پہلے 15 کہا، بعد میں 10 کا، اور 10 پہ انہوں نے ٹپا مار دی کہ 10,000 دیں گے. نہ کہا ہمیں وہ ویڈیو دے دو، نہ کہا ہمارے کوئی شروط ہے، کچھ بھی نہیں کہا. احمد سلطان نے کہا کہ میں تیار ہوں، کیا اگر میں جا کر کہوں اور وہ مان جائیں کہ وہ ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ پیسہ دے دیں گے ترنت؟ انہوں نے کہا یہ وعدہ ہے، میں دے دوں گا. اتنی سی بات ہوئی. وہ احمد سلطان جب آئے اور جب انہوں نے بات کی، عمر اباب صاحبہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، پیر آسکاری کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے $10,000 اور ہم اس کو، آپ یہ ذمہ داری قبول کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی شروط آپ نے پہلے نہیں بتائے کہ کون یقین کرے گا. ظاہری بات ہے آپ بالکل ایک بھی یقین نہیں کرو، یہ شرط تو ہی نہیں. میں آپ کو کیسے یقین دلا دوں؟ میں آپ کو کیا یقین دلا دوں؟ آپ کو پیسے اب دینے ہیں، اب یہ چالاکیاں کر رہے ہو کہ بھئی کون گارنٹی دے گا؟ بھئی رب ہے میرے اور آپ کے درمیان، جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس رب کی قسم کہ کوئی خیانت نہیں ہوگی ہماری طرف سے، یہ وعدہ ہے. آپ کو بھی اسی رب کی ہی قسم کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کر لو. اتنی سی بات ہے. ورنہ گارنٹی میں کہوں میرا پلانا گارنٹی ہے. جس طرح سے وہ بلے مانس انسان جب ضرورت ہوتا ہے تو وہ طلت اس کا گارنٹی بن جاتا ہے، اور وہ جو شاتم الرسول ہے اس کا گارنٹی بن جاتا ہے. اس طرح میرا کوئی نہیں ہے. میرے صرف ایک زبان ہے، مرتا مر جاؤں گا، مرتا مر جاؤں گا، خیانت نہیں کرو. ایک منٹ، مرتا مر جاؤں گا. سن لیجئے بھائی جان، سن لیجئے، سن لیجئے. مرتا مر جاؤں گا، خیانت نہیں کروں گا. اور اگر ہماری طرف سے یہ بات آ گئی کہ انہوں نے کیا ہے، آپ اس سے ڈبل لیں، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. ہو گئی بات آپ کی. ایک منٹ ٹھہر جاتا. اب اس کو چپ کروائیں، اس کو چپ کروائیں پیر صاحب. اس کی بات ہی نہیں ہے بیچ میں، نہ یہ 3 میں نہ 13 میں. پپو صاحب آپ بات کو خراب نہ کریں پلیز. یہ میرا وعدہ ہے. اسکانی صاحب دیکھیں آپ، اچھا آپ کی بات ابھی باقی ہے، کر لیں. اس کے بعد آپ بھلے 10 منٹ بات کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سنوں گا آپ کی بات. اب میرے بھائی ہیں، ہماری طرف سے اگر اس طرح کی خیانت ہوا، یہ میرا وعدہ ہے، ڈبل دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے، ڈبل دوں گا. اتنا کر سکتا ہوں. اگر آپ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے میں یہ نہیں کروں گا. جس طرح سے وہ بلے مانس انسان نے دھمکیاں دی تھی خامخواہ کی، میں جھنڈا لے کر جاؤں گا، میر لطیف کے گھر پہنچ جاؤں گا، وہاں پر یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سارا میں یہ نہیں کہوں گا. بھئی تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ نے یہ وعدہ کیا، آپ پورا نہیں کر رہے، اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. ذلت تمہاری جو ہے قادیانی بنائیں گے. آپ نے ایک بات کی ہے، اب آپ کو مکہ یاد آ رہا ہے تو اپنے منہ پہ مارو کس کے. پیسہ دے دو، شرافت اسی میں ہے، پیسہ دے دو. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہے اس کے پاس یہ ویڈیو ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے سوا اور ام رباب صاحبہ کے سوا کسی کے پاس بول رہا ہے. کسی نے بھی پیش کیا گویا کہ میں نے پیش کیا ہے. پیسہ دے دو. کسی
ने भी पेश किया तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये नहीं कहूंगा नहीं नहीं पहले के बाद ये आ गई बात, आप मेरा झंडा जो है गाड़ दें, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे आप कुछ भी कहें, समझ रहे हैं? किसी के पास वो ऑडियो नहीं है, मेरे सिवा उम्र बाप साहिबा के सिवा किसी के पास नहीं है। जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और जिसने भी शाये की तो समझो आस्कानी ने शाये की है, पैसा दे दो, इतनी सी बात है। हां अगर नहीं दोगे कल आखिरी दिन है, हम जो है उसको शाया कर देंगे, जिस तरह हमने कहा शाया कर देंगे, फिर लोगों के पास चली जाएगी, फिर तो चली जाएगी, इतनी सी बात है। फिर नहीं कहना कि आपने क्यों खयानत किया, भाई खयानत नहीं की, आपने वादा पूरा नहीं किया, हमने तो शाया करना था, ये हमने पहले वादा किया हुआ है। अब आप बोले जितना भी बोलना है। जी ठीक हो गया पीर साहब, आपने 2-3 बातें की हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर तलत मलक ने उनकी जमानत दी है, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, आपकी और उमेर बाप की कौन जमानत देगा? आप ये जो अपना कर रहे हैं ना, अपना ये ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। इधर सबूत देखें, इधर नीचे अबू बकर मीर भाई लिख रहे हैं कि उमेर बाप का करार मौजूद है, इसने शार्प शूटर को आइडियो का एक हिस्सा सेंड किया है, ठीक है। बाद फिर अगर वो मोबाइल से डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई हमने कसम उठा लिया, हम मोबाइल से डिलीट कर दिया, क्या वो आइडियो कहीं और सेफ नहीं हो सकती? क्या वो लैपटॉप में नहीं जा सकती? क्या वो कंप्यूटर में नहीं जा सकती? जा सकती हैं, ठीक है। आपके ऊपर कैसे भरोसा कर लें मेरे प्यारे भाई? आपका तो कोई इधर जमानत देने वाला भी नहीं है, तो ये जो दलील आप दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरासर गलत दे रहे हैं। हम आज भी अपनी बात पे कायम है कि भाई हम तो पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है। आपने जो बात की है कि पीर साहब एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं एक आ मिनट गया भाई, मेरा मशवरा आपको ये, पैसे पकड़े हुए हैं ना, पीर साहब एक सेकंड, पीर साहब पैसे इसको मैं कह रहा हूँ पकड़े ना रखो, बैंक में जमा करा दो, कुछ खींच ना ले, जमाना बड़ा खराब है, हालात खराब जा रहे हैं। पप्पू भाई बात सुनो, मैंने ये जी पीर साहब मेरी बात सुने, इधर जज्बात नहीं काम करेंगे। जब भी कहीं रिश्ता देखने के लिए जाते हैं ना, तो एकदम से रिश्ता नहीं हो जाता। अहमद सुलेमान को हमने ब्रिज बना के भेजा था आपके पास, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई बात नहीं है। कैसे भरोसा कर लें आप लोगों के ऊपर, जबकि जिस मैडम ने ये बात उठाई है उनकी तो लाखों आइडियो जो हैं इधर टिकटॉक पे पड़ी हुई हैं, जो उन्होंने पैसे खाए हुए हैं लोगों से, जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को उनके बकौल, ठीक है। तो कैसे भरोसा कर लें आप लोगों के ऊपर? हो गई आपकी बात प्यारे भाई? जी करें बात। देखिए मोहतरम, मैंने पहले ही आपको कहा कि लड़ाई के बाद अगर मुक्का याद आ जाए तो उसकी जगह अपना मुंह ही है, कहीं और आप नहीं मार सकते उसको। और ये मिसाल वही बलिए मान इंसान से ही मैंने सुना है, और दुरुस्त मिसाल है। अगर इस तरह का कोई, क्या वो नहीं जानते थे कि इनका कोई गारंटर नहीं है? क्या तो अपने मुक्के पे, अगर अपने मुंह पे अमर भाई ने मुक्का नहीं मारा तो अली हक्के मार दो, या अमरीक इमरान के मुंह पे मार कुत्ती दे आ पुत्रा, चुप कर जा, तेरी मां नु कुत्ते यैन खामोश हो तू हरा। पीर साहब ये देखिए आगे गंदे बाबू की तारीफ उतार दिया, मैंने उतार दिया, उन्होंने गाली दी। पीर साहब ये उनके मुरीद हैं, तो अमर भाई अपने मुंह पे मुक्का ना मारे, इनके मुंह पे मार दें, लड़ाई के बाद वाला याद आ रहा है। एक मिनट, मैंने उनको उतार दिया, उन्होंने गाली दी। भाई मैं माजरत करता हूं, आपके पास जवाब नहीं है तो आप जो है गालियां दे रहे हैं, तो माजरत खा हूं भाई, प्लीज। हाँ आप नीचे लिख दे। एक बात चल रही थी पप्पू भाई, एक बंदा, एक मुरीद एक मुक्का नहीं खा सकता तो 10,000 यूरो देगा अमर नजीर के पीछे। मुक्का तो तू खा नहीं सकता अमर नजीर से, जो बाद में याद आ गया। डाक मास्टर साहब आपसे गुजारिश है कि 10 मिनट के लिए बरोड को संभालिए, मैं आ जाता हूँ, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बातचीत चलती हुई जो खराब हुई है, ये रॉन्ग नंबर ने रॉन्ग काम किया है। रॉन्ग नंबर भाई, आपको
بھائی میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ احمد نذیر نے اگر خود کو مکہ نہیں مارنا ہے، بزرگ آدمی ہے، تو ملک عمران کو مار دیں یا علی حق کو مار دیں جو بات ماسر صاحب میں دیکھیں، ماسر صاحب آپ میرے دوست ہیں، اگر میں ملامت ہوں آپ مجھے سیدھا ملامت کیجئے. دیکھیں انہوں نے بغیر کسی شروط کے، کیا پہلے ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا کوئی گارنٹی دے گا؟ یہ تو ایک جو ہے خیانت ہے جو کی جا رہی ہے. ایسے اتنے بڑا جو ہے ایک نامور انسان ٹک ٹاک کا، وہ اس طرح کی خیانت نہیں کر سکتا. میرے خیال میں ان کے شاہ نشان نہیں ہے. ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ. اتنی بڑی خیانت ان کی طرف سے میرے خیال میں قابل قبول نہیں. ہاں وہ کوئی شروط ڈال دیتے، کچھ کہہ دیتے تو ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں. کہا بریج کا کام کرو، اگر وہ ڈیلیٹ کر دیں گے ہم پیسہ دے دیں گے. انہوں نے کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتا ہوں، پیسہ دے دوں گا. اب جب آئے ہم نے وعدہ بھائی اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈیو کسی کے پاس نہیں ہے. رہی بات کیا نام ہے، ایک حصہ ان کے پاس ہے، تھوڑا سا ان کی آواز سنا دی گئی ہے، آواز کہ ان کی خاتون کی یہ آواز ہے. یہ نہ سمجھ لو ان کو پوری بات نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھو یہ پلانے کی خاتون کی آواز ہے، تصدیق کرا لو. اگر پورے آڈیو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے رہے، لیکن ہے ہمارے پاس. اگر خود سیالوی صاحب کہیں کہ چلاؤ، ادھر آئے میں چلا لیتا ہوں. یہ ہے وہ بات. ان کے پاس جو بات ہے صرف آواز کی پہچان کے لیے کہ یہ دیکھو ایسے بات ہم نہیں کر رہے، اس کو نہیں دے دی گئی، کسی کے پاس نہیں ہے. میں اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ سن تو لیں، اگر وہ پیسے، وہ آواز نکلی، وہ ویڈیو نکلی تو سمجھ لو ہم نے دی ہے. ہم بھلے کسی کے پاس ہو، ہم آپ کے پیسے واپس کریں گے اور اس سے اوپر دے دیں گے. اس سے بڑا میری ایک بات ہے، ایک منٹ بھائی، بات کو خراب مت کرو نا بھائی، بات کو خراب نہ کر دو نا پلیز. ماسر صاحب نہیں سمجھ آ رہا ہے بھائی، ایک منٹ بھائی جان، بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ آپ ایسے کود پڑے ہوئے ہیں، سن تو لو. اچھا آپ سے بھی بات کر لیں گے نا، کہ کودنے کی ضرورت نہیں ہے. ماسر جی 10 منٹ کا میں وقفہ کر رہا ہوں، بروڈ کو دیکھ لیجئے، بات کر لیجئے، ٹھیک ہے ماسٹر؟ ٹانگ ماسٹر بھائی سب آپ جائیں. ٹانگ ماسٹر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. چلیں ہم تو آپ کو ظاہر مسلمان نہیں سمجھتے، مجھے یہ بتائیں ایک مسلمان عالم دین، عالمہ فاضلہ، ان کے پاس ایک مسلمان بہن کی بات ہوتی ہے، بہنیں آپس میں 100 باتیں کرتی ہیں، وہ عالم دین کی جو ہیں گھر والی ہیں، جو میں نے سنا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، میں نے ادھر سننا ہے، اڑتے سنی ہے. اب وہ دونوں آپس میں سہیلیاں بات کر رہی ہیں، عالم دین کی گھر والی نے بات کی ہے، عالمہ کسی گھر کا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہے. تو ٹانگ ماسٹر صاحب کتنی گھٹیا بات ہے کہ وہ عالمہ، وہ ہماری بہن کی، جو ہماری ماں بھی ہیں، ہماری بہن بھی، ہمارے عالم دین کی گھر والی ہے، ہمارے لیے سارا آنکھوں پہ، ان کی آڈیو اور مسلمانوں کو بھیج رہی ہیں یا بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یار ہم کتنے گھٹیا، اس سے نچلے گھٹیا لیول پہ ہم جا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان عالمہ، اور یہ عالم پیر صاحب بھی عالم ہی ہے، تو یہ دوسرے مسلمان کو ایک قسم کا انڈائریکٹلی بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. ایک منٹ رکیں، یہ بلیک میلنگ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سیالوی صاحب کے بیٹے نے وحی کی نزول کا اعلان کیا ہے کہ چلے گی، جاری ہے، اور نبوت کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آڈیو ہے. اب وہ آڈیو اس لیے منظر عام، انہوں نے آڈیو کا ذکر اس لیے کیا کہ لوگوں نے یقین نہیں کیا ان کی بات پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ عامر نذیر بھائی نے کہا کہ اگر وہ کوئی آڈیو ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اس لیے وہ میں خریدتا ہوں اور اس کے میں $10,000 دیتا ہوں. یہ ہے اصل مسئلہ. اگر تو ام رباب نے یہ کہا ہوتا کہ یہ میرے پاس آڈیو ہے، اگر کوئی خریدنا چاہے تو خرید لے، ورنہ میں اس کو سرعام کر دوں گی، تو پھر وہ بلیک میلنگ میں جاتا تھا. لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات، ابھی جو یار میں بار بار ان کو انوائٹ کر رہا ہوں، کدھر گئے، جو بات انہوں نے کی تھی، ان کا نام کیا تھا یار؟ علی ویسے میں اس میں آگے حق صاحب ہے، حق شک تو یہ نہیں ہے، گالی باز ہے، علی اس کا نام ہے، جزاک اللہ. یہ جو علی حق بھائی نے بات کی ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی گارنٹی
वैलिड गारंटी शाह साहब नीचे आए, शाह साहब कभी कभी नजर आते हैं, शाह साहब को उठा लें, उनका इसके ऊपर क्या फतवा है या क्या, वो हमारे बहुत बड़े आलम है, तो वो अच्छी हमारी राय। मैं बात कर लूं। मैं ये कह रहा हूं, अली हक को ये बात कर रहा हूं कि आसकानी भाई ने जो गारंटी दी है ना वो वैलिड है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि ये बाद में लीक होगी या कोई और उसको लीक कर देगा तो उसका जिम्मेदारी भी आसकानी भाई ले रहे हैं कि आइंदा अगर ये ऑडियो किसी ने भी लीक की, मेरे अलावा भी किसी ने भी लीक कर दी या किसी के पास भी हुई, दूसरे के पास वो लीक कर दे, उसका जिम्मेदार मैं हूं और मैं उससे डबल वापस। आप पीर साहब की गारंटी लेते हैं या उम्मीद सिस्टर की? बात तो ये है, इनकी गारंटी कौन देगा? किन की गारंटी है? आसकानी भाई की। आसकानी भाई की गारंटी कौन देगा और उमेर बाप की गारंटी? देखें वो तो फिर आप अल्लाह की बात है, बात तो सही कर गया। देखें जो भी है, अमन नजीर की यहाँ पे हजारों लोग, मेरी बात सुने मेरे भाई, अमन नजीर की गारंटी हजारों लोग दे देंगे टिकटॉक पे, तो बात तो उस बंदे की ठीक है कि अली की बात ठीक है, उम्मे रबाब की और जाहिद अस्कानी की कौन गारंटी देगा? टिकटॉक पे कोई एक बंदा भी आ गए कि वो कह दे कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ पीर साहब की या सिस्टर की, तो फिर भी समझ आती है। तो बंदा क्या है ऐसे केस में क्या बंदा कर सकता है? जी नहीं, मैं बताता हूँ ना, जाहिद अस्कानी भाई जो है वो उम्र रबाब प्लस के साथ बाकियों की भी गारंटी ले रहे हैं कि अगर कोई भी उसको लीक करेगा या किसी के पास हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। अब रहा आसकानी पर एतबार, आसकानी भाई अपने आप में इस मामले में अपने आप के लिए उन्होंने खुदा को गवाह ठहरा दिया, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं भाई? साहब जो कत्ल कर देते हैं ना, जो रेप करते हैं, जो मौलवी हमारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ जाती कर रहे हैं ना, वो भी कुरान पे हलफ बाद में देते हैं, खुदा की कसम उठाते हैं कि हमने कोई जिना नहीं किया। आप आसकानी भाई को इतना ही सस्ता समझते हैं कि वो ये खुदा को गवाह ठहरा कर भी वो मुकर जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं इनको सस्ता नहीं कह रहा, लेकिन बात ये, एक बंदा अपने असल तस्वीर से सामने आ नहीं रहा, किसी को उसको अता पता मालूम नहीं है, तो फिर उसकी कोई बात की वो आप समझ रहे हैं, वो इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं बनती ना। एक बंदा सामने मौजूद, अगर एक आदमी अल्लाह को गवाह ठहरा रहा है बीच में, तो फिर इसका कोई हल है ही नहीं, तो फिर इसके बाद इसका कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। यार देखें, किसी की बात का पर्दा रखना भी होता है, सही है, हमें इस्लाम ने ये सिखाया है कि किसी की अगर कोई ऐसी बात है उसका पर्दा रखा जाता है। ये क्या आप लोगों ने लगाई हुई है? आप लोगों को समझ आ रही है? आप लोग ये कर क्या रहे हैं? ये तो कोई नबूवत का दावा करे तो बीच में पर्दा रखना चाहिए। हाँ तो कर दो, हो सकता है कि सही है वो लड़का पागल हो, फिर वो लड़के का दिमाग घूम गया हो, फिर तो फिर उसके पागल होने का सबूत चाहिए ना, फिर उसके पागल होने का सबूत चाहिए। जरा सी अक्ल व फहम है आप लोगों में, जो आप लोग यहाँ बैठ के दीन फैला रहे होते हैं, ये किस बेसिस पे फैला रहे हैं आप लोग दीन? क्या है आपके अंदर? सिंह भाई एक अच्छा सिंह भाई मैं आपको एक सिंह भाई कानूनी बात करता हूँ। ताग मास्टर ये दिख रहा है कि सिंह साहब एक सेकंड, ताग मास्टर साहब ये अगर बात ये किस किस्म की बात है? सिंह भाई मैं मेरी बात सुनिए यार, ये आपकी आवाज सही नहीं है। ताग मास्टर साहब ये जो देखें, इसका तो किसी को पता नहीं है पीर साहब का कि बलूचिस्तान में बैठे हैं, इंडिया के किसी शहर में बैठे हैं, ईरान में बैठे हैं, किधर बैठे हैं, कोई किसी को नहीं पता, लेकिन उमेर बाप का सबको पता है। अब उमेर बाप साहिबा बैठी हुई है कनाडा के अंदर, जिस भी वीजे पे है, उन्होंने पता नहीं शादी की थी या वल्लाह वाली साल लिया था, जो भी। अब जो उमेर बाप साहिबा एक मुसलमान आलम दीन को अगर ब्लैकमेल अगर कर रही हैं और वो वहां पे जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, अदालत में ले जाते हैं कि यार एक मुसलमान की जान खतरे में डालना चाह रही है या डालने की थ्रेट कर रही है या डालेगी, ओ भाई उस मुसलमान ने जो भी किया, उसने नबूवत का दावा किया नहीं किया, भाई हम किसी के मामले लगते हैं। तो भाई ये जो घटिया हरकतें हमारे मुल्कों में चल जाती हैं, सरतान से जुदा या उन्होंने गाला कट दी, इन ममालिक में किसी को धमकी देने का मतलब ये है कि अगली फ्लाइट से इंशाल्लाह ताला उमेर रुबाब साहिबा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जा सकती हैं, अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे। तो भाई मेरा ये मैसेज ये भी है, हमारी सिस्टर का, हमारी मोहतरमा है, हमारी बड़ी हैं, लेकिन आप भी थोड़ा ना फोन के हर जिधर भी पैसा नजर आए ना, तो वहाँ पे हाथ नहीं डालना चाहिए कि तू भी पैसा लग जाए, तू ही लग जाए, किरे ना किरे वो शेर भी बैठा होता है। मेरा मशवरा है, मेरी बड़ी है, मैं एक छोटा होने के नाते उनको मशवरा दे रहा हूँ कि 10,000। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर आप कोई जो है ना इतबार ना करें अस्कानी भाई पर। और कल जो है वो तीसरा दिन है, उसके बाद चौथे दिन वीडियो लीक होने दे, कौन सा आसमान गिरने लगा? यार मैं भी एक मशवरा देना चाहता हूँ सी विंग साहब को
अगर वो सुन रहे हैं तो, और आपकी इजाज़त हो तो। जी जी जी। सी विंग भाई आप सुन रहे हैं? जरूर सुन रहे होंगे, आप बात करें। नहीं, मेरा ख्याल वो नहीं जी सुन रहे। बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। सी विंग भाई आपने एक नगमा सुना हुआ है कि बच के निकल जा इस जी जी नगरी मैं आपकी बात से सुन रहा हूँ, बोलिए। करता बच के निकल जा इस नगरी से करता मोहब्बत कोई नहीं। आप गलत जगह पे गलत सवाल कर रहे हैं। यकीन यार जानिए। देखें, बात सुने। चले अच्छी बात करी आपने। साहब निकले या नहीं निकले, देखें, मुझे मैं फिलहाल बचने लगा हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। खास सुना माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वालेकुम सलाम। हाँ जी, हक भाई कितने चले गए? हाँ जी, की हाल है टाक मास्टर साहब, ठीक हो? जी मैं दुरुस्त है जी। दुरुस्त हो? चलो, लगदा नहीं। चलो बंदे ठीक होंदे ने, तुसीं दुरुस्त हो। चलो मैं ठीक है। मैं बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। मैं पप्पू करके मैं काल पाई सी ते तुसीं उਦੋਂ काल ही नहीं पिक कीती। हुण पप्पू नस गया ते तुसीं काल पा ले चुक लईए। यार जो कुछ तुसी पप्पू ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। नहीं ना जो किसी डिग्गा खोते ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਕਮਿਆਰ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਨੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੋਣ ਦੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦੀ ਲਗਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖਲਾਕਨ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਪੋਚਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਪੋਚਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਫੜਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰ। ਅਗਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੰਗੇ ਫਲਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਕਿ ਉਮਰ ਬਾਪ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $10,000 ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 10,000 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ? ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋ ਸਿਆਲਵੀ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਂਡੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ $10,000 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਟਾਕ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ $10,000 ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣ, ਟਿਕਟੌਕ ਆ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਕ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ $10,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? उमर साहब आप मुझसे बात कीजिए। उमर साहब आप मुझसे बात कीजिए प्लीज। हाँ जी जी बात कीजिए, क्या एतराज है आपका? जी अच्छा लो, पहले ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਨਮਨ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਲੀ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਮਰ ਬਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਖ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ये जितने भी बातें ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਰਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा सुने भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ?
अहमद सुल्तान ने कहा कि मैं जाता हूं, उनसे बात कर लेता हूं, मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे वल्लाहु आलम। ये अहमद का गुफ्तगू है, अहमद सुल्तान के खुलासा गुफ्तगू का। कहा आप जाओ, बात तो करो, देखो। कहा मैं जाकर बात कर लेता हूं, क्या आप वादा करते हैं कि आप पैसे देंगे? कहा मैं वादा करता हूं कि पैसे $10,000 दूंगा, उन्होंने सिर्फ डिलीट करना है, इतनी सी बात। अब बाद में ये तमाम जो बातें कर रहे हैं, कौन गारंटी देगा, कसम अल्लाह को गवाह बनाकर कोई 1 लाख रुपया देगा, भाई मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तो फिर मैं नहीं दूंगा। खुद तो भाई 1 लाख नहीं देते, दूसरे को $10,000 की जो है ना सुन वो तो कह रहे हैं कि लीजिए, अल्लाह को गवाह बना रहे हैं। भाईजान सुन तो लीजिए। तो ये मुक्का उनको याद नहीं आया पहले, अब वो अपने मुंह पे मार दे। बात मुक्के की नहीं पीर साहब, कभी आप पंचायत में बैठे हैं, कभी फैसला किया है पंचायत का? पंचायत में अगर वो बेटा होता तो इस तरह की बात ही नहीं करता। मेरी पंचायत बात सुने, वो आया, एक बंदा आपके पास आया बात को एक जगह पे लेके आने के, एक पॉइंट पे लाने के लिए। हाँ, क्या पॉइंट पे लाने के फाइनल लिए? बात तो फाइनल होनी थी ना कि हाँ भाई हर बंदा कोई भी हो, कोई भी हो बंदा, वो गारंटी तो लेगा ना किसी चीज की कि हाँ यार अगर मैं आपको ये चीज देता हूँ तो इसकी क्या श्योरिटी है कि ये मुझे वापस मिलेगी, या ये आप उस बातें बंदे कर तक। जाता ना, ये बातें कर जाता, अब याद आ रहा है। भाई उसके वो जब आया होगा नहीं, उसके पॉइंट ये वाला पॉइंट नहीं होगा उसके ज़हन में। यानी ये वो पंचायती एक बंदा इंसान है, ये एक इंसान पंचायती है, बंदा वो है हर कि वक्त किसी राह चले हर चीजें इंसान तो याद को- रख के नहीं निकलता ना घर से। उमर साहब, ये पंचायती बंदा है आपका कि किसी भी इंसान को राह चले वो पकड़ लेता है कि आप जाकर सिर्फ इतना कह दीजिए, अगर वो मानते हैं उनको हम $10,000 देंगे, वो वीडियो डिलीट कर दे। वो उससे कहता है कि वाकई ना दे दोगे, वादा करते हो, मुकर तो नहीं जाओगे? कहते बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, पैसा देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ वीडियो। मैं ये समझता था कि वो ये कह देते हैं कि भाई पहले वो वीडियो हमें सुनाओ, शायद तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम सुनेंगे और सुनने के बाद आप वादा करें कि इसको डिलीट करेंगे या कोई गारंटी हमें चाहिए। वो तमाम शुरूत बता देते, कुछ भी नहीं है। पीर साहब भाई आप अपनी बात पे खुद ही वापस आ जाएं, आपको पता चल जाएगा। वो उसने उधर से वादा लिया कि हाँ भाई आप दोगे तो मैं बात करूंगा जाके, वादा लिया, उन्होंने वादा दिया, तो आप भी तो देना कोई चीज, आप भी तो गारंटी देना इस बात की कि आप वो डिलीट करेंगे, आपसे आगे नहीं जाएगी वो। अगर उस गुफ्तगू में ये भी बात थी, उनकी रिकॉर्ड में ये भी बात थी कि उनसे भी कोई गारंटी हमें चाहिए, तब तो ठीक है, आपका ये बनता है। लेकिन जब वो है ही नहीं, ये मुक्का बाद में याद है, पैसे देने के लिए तारे नजर आ रहे हैं। एक तो मुक्के वाली मिसाल पता नहीं किन्ने सुना दी है, जान ही नहीं छड़न रही। एक दफा मिसाल होती है, एक दफा होती है, बार बार आप दोहराते रहेंगे तो उससे उसका वजन नहीं बढ़ जाएगा। इंसान की है। उमर भाई नाराज ना हो, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, मैं नाराज क्यों होऊंगा? हाँ, एक न्यूट्रल बात मिसाल करें, वो आप की भी न्यूट्रल हो गए, ये बात सोचें क्यों आप न्यूट्रल हो नहीं ना रहे अभी, क्योंकि अभी आपको $10,000 आता हुआ नजर आ रहा है ना, हाँ, तो आप बिल्कुल कैसे न्यूट्रल हो सकते ये हैं? बात तो दुरुस्त है। मैं इतना वादा करता हूँ, बात सुनेंगे आप लोग इस बहस में। इतना वादा जरूर करता हूँ, ये भी मैं अपनी तरफ से अपनी जो है वो क्या कि ये भी मेरी, उसके पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उतना डबल मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से खुद कह रहा हूँ। चले ये बात भी मान हालांकि ली, मुझे ये कहने की जरूरत भी नहीं है, मेरी बात क्योंकि सुने, उन्होंने ये शर्त रखी भी नहीं है। आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि आखिरी आपको बात दे सुन दिए, लीजिए, आखिरी आपने बात सुन वादा लीजिए। कर लिया। आखिरी बात सुन लीजिए। अब अगर वो अपने वादे पे पूरे उतरते हैं, जो कुछ उसने कहा है ठीक है, नहीं हम तो कुछ भी ना कहें, कादियानी उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये मुझे वल्लाह यकीन कीजिए, ये ज्यादा खतरा है इसका। उसकी मर्जी ना दे, हम तो कहते हैं ना दे, हम चाहते हैं ना दे, ताकि उसकी जो है वो बेइज्जती बनी रहे। ताकि आप मुसलमानों को बदनाम करें, मैं नहीं यही है ना करूंगा। मकसद आपका? आज के बाद अगर मैंने ये बात की तो आप मुझे कहें, मैं नहीं नहीं, कहूंगा। मकसद तो फिर आप अभी आपने अपने मुंह से ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि वो पैसे ना दे, हाँ, और हम वीडियो जो ऑडियो है ना वो लीक करें और मुसलमानों की बदनामी हो, तो मेरे भाई फिर वो अपने आप यही को चाहते हैं बदनाम ना आप। तो फिर इतना आपको बड़ा- इस चीज का, ये आपकी बात बनती इतना- नहीं है कि इतना मुझे बड़ा- डर है कि मैं आपको- कादियानी इसको नहीं छोड़ेंगे। भाईजान मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा होगा, ये बात मेरी दुरुस्त है, सही है, आप भी जानते हैं, मैं वो आपको समझा रहा हूं, उस खतरे से आपको आगाह कर रहा हूं जो आपके सर पर है, तलवार की तरह मंडला रहा है, क्योंकि आपने इस तरह की हरकतें की हैं।
कि हम फौज लेकर जाएंगे, हम अपने पूरे टोले को लेकर जाएंगे, डंडा लेंगे, वो क्या नाम है, वो झंडे लेंगे, उनके घर के सामने जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, ये तमाम बातें आपने की। अब कादियानी को चांस मिलेगा। आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, इसी में आफियत है। और ये आपकी अपनी जहालत थी, आपने इस तरह की हरकत की, हमने तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। मेरी बात सुने, खुद आप भी खुद को एक नाम नहाद मुसलमान कहलवाते हैं और वो मोहतरमा भी खुद को नाम नहाद मुसलमान कहलवाती हैं, तो उनको ये बात ज़ेबा देती है कि हाँ भाई इसमें तो हमारी बदनामी होगी, कादियानी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो ये चीज़ करने वाली नहीं है। तो आपको नहीं चाहिए था कि ये चीज़ ना करते आप? किसी ने ये बात की नहीं, वो भलेमान इंसान ने खुद इस बात को किया है। हमने कब की है भाई? नहीं, किसने बोला था कि ऑडियो मेरे पास है? किसने बोला था? हाँ, वो ये तो भलेमान बोला था। इंसान ने बोला था। हाँ, उससे पूछने पर ना बोला था ना, पूछने पर बोला था कि आप ये क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात। उन्होंने कहा मेरे पास ऑडियो है, गुफ्तगू है, सारा कुछ है। और लोगों ने जोर दिया कि रिलीज करो, मैंने कहा रिलीज नहीं करना, ये मैंने खुद कहा रिलीज नहीं करना। मेरे कहने पे उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो फिर अब क्यों वो तलवार लटकाई है सर पे कि हम कर, एक दिन है, चौथे दिन हम कर देंगे? भाई अब क्यों कह रहे हैं आप? बात यह है कि हमने अब ये इसलिए बात की है क्योंकि भलेमान, अगर आप मुसलमान हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं, जितना हक आमर नज़ीर का बनता है, जितनी बदनामी आमर नज़ीर की बनती है, उतनी आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है, सबकी बनती है। अब ये तो फिर आप बार बार ये एक चीज, ये हमने तो रिलीज एक किया ही बात को नहीं एक ना बंदे के लिए आप भाई, हमने तो रिलीज किया ही नहीं भाईजान, वो रिलीज हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने खुद से रिलीज करने एक की बड़ा धमकी तो दे रहे हैं ना भाई। देखिए, मैं इस बात को यूं भी अभी कह तो सकता बात हूं, धमकियों तक आ गया कि आप पैसे दो वरना हम तो कल कर देंगे रिलीज। धमकी है, इसको क्या कहते हैं? सुन तो लीजिए, ईरान में शायद कुछ और कहते हो भाई। भाई सुन तो लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, उन्होंने ये जो बड़क मारी, वो चाहता ये था कि वो रिलीज हो, वो चाहता भी यही है। ये मैं भी कह सकता हूं कि ये इस तरह की बातें करके तैश में लोगों को लाकर ताकि वो उसको रिलीज करें, ये मैं भी कह सकता हूं। हालांकि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ये सिर्फ तखमीने हैं भाईजान। उन्होंने अगर जो वो चाहता रिलीज करवा तो 10,000 की वो क्यों हामी भरता? तो दे दो ना, फिर दे दो। पता नहीं, आप एक बात पे खड़े नहीं होते, कभी उधर घूम जाते हैं, कभी उधर घूम जाते हैं। अब पंजाबी की मिसाल है इसमें भी, लेकिन वो मैं दे नहीं सकता, आपको बड़े हैं उम्र का लिहाज है, इसलिए मैं वो मिसाल दे नहीं सकता। फिर आप बड़े बड़े मिसालें दी हैं, ईडी के जो है वो जूली से हमको उठाया है, ये भी मिसालें दी हैं। ये तो अगर आप नहीं, वो मिसालें नहीं है, वो तो अलग चीज है ना। एक मुहावरा जो होता है, मिसाल जैसे मुक्के वाली आप बार बार कर रहे हैं ना, ऐसी एक वो मिसाल है। फराज भाई मैं भी बड़ा हूँ, फराज भाई मेरी मिसाल भी ले लो। जी अस्सलाम वालेकुम। फराज भाई जी दसो जरा गौर ना सुनियो, गौर ना गल सुनियो प्यारे भाई। उमर भाई ने पहले एक बात की थी कि वो ज़हनी गल होना अपनी ही दवाई खराब हो सकते। वो सुन रहे हैं बात भाई? वो कह रहे थे कि ज़हनी पप्पू तू जान छड़ा ली, दूजा पप्पू तुहां चुक लिया। वो जो है ना ज़हनी कह रहे थे उसको, तो पाकिस्तान में अपनी अदालत में आ गया एक और जो ज़हनी था, जो ओरिजिनल डिक्लेयर था ज़हनी, उसको तो आपने कत्ल कर दिया और इधर आप ज़हनी बना रहे हैं। क्यों भाई, ये दोगला म्यार क्यों है आपका? ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਬੜੇ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਫਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਸੁਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। अंधे को अंधेरे ਮੈਂ में ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ। ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਿਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਮਕਸਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ? ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜੇ, ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ 10,000 ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੜਦੇ ਨੇ ਮਸੂਦ ਭਾਈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਇਮਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਸਤਾਨੀ भाई तवज्जो दे नदीम साहब, मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन लेना। उमर बाप के साथ आप उठते बैठते हैं, ठीक है, आपने उनको बहन कहा हुआ है, आप बहन भाई बने हुए हैं ना, दोनों मिलके अल्लाह की रजा की, उसके रसूल की रजा की खातर इसको खत्म कर दे, मामले को डिलीट कर दे। वो कब रिलीज कर रहे थे? ये तो शेरा अहमद नजीर ने ले लिया है। छोड़े उस बात को, गोली मार दे, कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा, आपको अल्लाह की रजा की खातर की है, किसी की खातर नहीं कहा। देखिए मेरी बात सुन लें, अब मेरी बात सुन लें। आपने कहा अल्लाह की रजा के लिए इस मसले को छोड़ दें, मैंने इसी वक्त छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन जो जिल्लत बनेगी अहमदियों से, उसका क्या करें? भड़क तो मारी ना उस भले मास इंसान ने। ये रस्कानी भाई, जब आपने छोड़ दी, दूसरे ने छोड़ दी, तीसरा कौन होगा बीच में करने वाला? तो सुन ले भाई, बात तो मुकम्मल होने देना प्यारे भाई। बात तो वो कहते हैं जो बंदे को समझ, अब अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया तो फिर बदनामी कैसे किधर से आ गई? मेरी बात तो मुकम्मल सुन ले। मैंने अगर छोड़ दिया, मैं छोड़ देता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, और पहले भी ना हम ऐसे करने वाले थे, और पहले मैं ही मना करने वाला था, और लोगों ने बड़ी कोशिश की, मैंने उनको प्ले करने नहीं दिया, मुझे भी गुस्सा दिलाया, मैंने कहा नहीं हम कभी भी पेश नहीं करेंगे। लेकिन जो भड़क मारी गई है, उस भड़क का क्या होगा? पूरी जिंदगी जिल्लत बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी। एक ये बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कौन देगा? मसूद साहब आप कह रहे हैं कि कौन देगा इतनी बड़ी रकम? देखें, $1 जमा हो गया है, और वो भी अकबर साहब ने किया है, कहता है मैं $1 दूंगा। जाहिर बात है, चंदा चुंदू करके लोग तो हैं, दयालु हैं अपने हैसियत के हिसाब से, यानी $1 का ऐलान हुआ है अभी, किसकी तरफ से? वो भी अकबर साहब की तरफ से। वजह, उन्होंने कहा कि मुझे दोनों से मोहब्बत है,
भले मान से भी मोहब्बत है और आस्कानी से भी मोहब्बत है। उनसे हो गई है गलती, अब आस्कानी का हक है कि वो दे दे। मैं अपनी तरफ से अपनी हैसियत के हिसाब से बीमार आदमी हूं, कुछ भी हूं, मेरे पे कोई नहीं है, $1 देने का ऐलान करता हूं। वो डटा हुआ है, पूछ लीजिए, अगर उसने नहीं कहा वो दे देगा $1। $1 जमा हो गया, बाकी आप लोग देख लें। मेरी तो यही नसीहत है जी। जी बात कीजिए भाई। चलो फिर अकबर भाई के साथ 33 सेंट मेरे भी यहाँ डाल पे दें। मेरी बात सुने, आपका वो प्यार कहाँ गया आपकी बहन के साथ जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर आप ये नहीं कर सकते? यहाँ पे अब डॉलर जमा करने की बात शुरू कर दी है कि $1 हो गया जमा, आगे बात करें। कहने का मतलब ये है कि फिर आप ये चाहते हैं कि डॉलर जमा हो, और नहीं जमा होते तो फिर रिलीज हो। अस्कानी भाई 33 सेंट मेरी तरफ से भी लिख लें, $33 सेंट। ਨਦੀਮ ये ਭਾਈ देख लें। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं समझ गया गल नूं, मैं पहले दिन तो समझ गया मैं बोलदा नहीं था, सुनना सारा कुछ। गल वही है मैं सारे दिन दे रोटी कोई नहीं खाधी, सारे दिन दे मैं रोटी कोई नहीं खाधी। अब तुसीं समझदार हो। ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਿ $20,000 ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 30 ਸੈਂਟ किधर है वो? यार मैनू बुलाओ, वो सारे मैनू बुलाओ, हौली हौली कारोबार किधर है? करिए। लाओ ना उसको, ले आओ, वो पैसे दे दे। किधर है? टिकटॉक में मौजूद नहीं, इसलिए पड़के मारने वाले हैं। पीर अस्कानी भाई मैंने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा अल्लाह की रजा की खातिर इस मामले को खत्म कर दो। मैंने कर दिया, आपने कहा, मैंने कहा कर दिया, लेकिन मुझे ये ठीक है, अब आप इसमें नहीं है। नहीं, अब आप इसमें नहीं है, अब आप पैसे की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर छोड़ दिया। अगर आप बात करेंगे तो फिर आपकी गर्दन गोल होगी इसमें। पैसों की बात तो दूसरों ने किया। एक मिनट ना भाई नदीम भाई, मेरी पीर बात अस्कानी भाई ने ऐलान कर दिया कि मैं इस चीज से दस्तबरदार हो गया, खत्म हो गया मामला। मेरे जान मेरी बात सुन ले, एक बात को ना उचके। मैंने ये कहा कि आप अल्लाह की रजा के लिए कह रहे कि छोड़ दें, मैं छोड़ दूंगा, अल्लाह की रजा के लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन कादियानियों का क्या बनेगा? अब दूसरी बात, इसका जवाब भाई इस चीज को छोड़ दें आप। जब आपने छोड़ दिया बाकी काम छोड़े, बाकी को क्या होगा क्या नहीं, कादियानियों का क्या बनना या नहीं बनना। नदीम भाई पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, मुझे कोई माकूल वजह तो बता दो। छोड़ो, छोड़ना नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए, आपने कहा जान भी कुर्बान है, छोड़ दिया। मुझे इसका जवाब दे दो, कादियानियों का क्या होगा? जिल्लत होगी हमारी? नहीं होगी, इसका जवाब दो। दूसरी बात, आप दूसरी जगह भी उस भले इंसान के पास चले जाएं, उनको कहें कि आइंदा इस तरह के जो है बड़के ना मारें, वरना इस तरह के बड़के मारोगे तो इस तरह की जिल्लत होगी। वो भी उनको कहें। अगर वो कहते हैं कि आइंदा वो बड़के नहीं मारेंगे तो अच्छी बात है, अल्लाह की रजा के लिए कहें कि इस तरह की बड़के आप मारते हैं तो देखो क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। एक मिनट बात सुन ले, अगर ऐसा ही हो जाता मामला तो वो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, उनको कहें, कह लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इस्लाम की खातिर है, अपने दीन की खातिर है, अपने नबी की खातिर है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे बात हम अहमदी लोग खोज निकाल लेंगे उस ऑडियो का। अच्छा, दूसरी बात पीर साहब जो अभी बार बार आप एक बात दोहरा रहे हैं कि अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दूंगा। जब छोड़ देंगे तो फिर कादियानी जो है इनके ये क्यों उछलेंगे? इनके उछलने की वजह बताएं। फिर अगर आप छोड़ ही देंगे, उनके पास कुछ होगा नहीं, तो फिर ये कैसे उछलेंगे? और दूसरी बात जो आपने बोली, आप कैसे अभी तक कह सकते हैं कि वो बढ़ के हैं उसकी? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उसने फिर पैसे दो, अगर बढ़ के नहीं है तो आप गारंटी दे दें, वो पैसे दे देगा। गारंटी का अगर हुआ था, गारंटी की बात यार तो मैं मामले को खत्म करना चाहना। उमर भाई छड्डो इस गल नूं, है नहीं है छड्डो पर इस गल नूं, बस अल्लाह की रजा की खातिर एक मामला नूं खत्म कर दे बस। पीर साहब इनको बताए तुपन कितने बनते हैं? नदीम भाई पीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं छड़ दिता, ये तो नहीं कह रहे, वो कह रहे मैं छोड़ दूंगा। वो ते एक ला रहे शर्त नाल है ना, वो मेरी गल सुनो, शर्त है ना नाल, माफी दी शर्त है ना अमर भाई अल्लू भी, कि वो भी माफी मंगन के मैं भी आई थी बड़क मार बैठा, मैनू नहीं मारनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और तुमन का अमाउंट तो पूछ लो पीर साहब, कितना अमाउंट है तुमन का? नदीम साहब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब उस भले में इंसान को कहें कि इस तरह की बढ़के आंदा ना मारे। आपने सिर्फ वो कहना है,
सिर्फ वो कहना है, वो आपका जवाब दे ना दे, वो आइंदा बढ़ के मारे ना मारे, आप बरी जुम्मा हो जाएंगे। आपने मुझे कहा छोड़ दें अल्लाह की रजा के लिए, मैंने छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए, आपकी इज्जत मैंने की। मैं चाहता हूं नदीम साहब ये बात कह दें उनको तो आप छोड़ देंगे अल्लाह की रजा के लिए। भाईजान एक मिनट प्लीज भाई, मेरी बात पूरी होने दें। नदीम साहब देखें, आपने कहा अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दें, मैंने अल्लाह की रजा के लिए अभी से छोड़ दिया। आप भी जाकर उनको कहें कि अल्लाह की रजा के लिए आइंदा इस तरह की बढ़के ना मारें। बस इतना आपसे मुझे मेरा मुतालबा है जी। नदीम साहब जी 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 आप ये कहें। देखें जी बात सुने, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर फिर दोनों चीजों को झुकना पड़ेगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल। अगर ये मामला सही अल्लाह और उसके रसूल की खातिर है, अगर अपनी दुनियावी के लिए फिर कोई कुछ गारंटी नहीं है किसी की भी। भाई मैंने तो छोड़ दिया ना, मैंने आपकी इज्जत की। आपने नहीं आप अकेले ने नहीं ना छोड़ना पीर अस्कानी भाई, आपकी जो सिस्टर है बनी हुई है, बहन बनी हुई है, बहन ही है आपकी, उनसे भी आपने ये गारंटी लेनी है, ये मामला खत्म करना है। मुझे किसी दूसरे का कोई वास्ता नहीं है भाई। हाँ बस यही बात है फिर। क्या है गल आ गई ना भाईजान मेरा क्या पीर वास्ता साहब है? बार बार वो गल तां ही करन दे सन कि मैं छड़ दिता। भाईजान मैं किसी का गारंटी कैसे ले सकता हूं? उमर साहब गल वाला की ये आपने उनकी गारंटी पहले कब मानी है कि अब मान रहे हैं? फिर भावें सजे फिर भावें पैंदियां वाले पासे रखो कि सराणे वाले लक विचकार ही है, लक विचकार ही आना जी। हाँ जी। नहीं, एक मिनट नदीम साहब, आप उनकी गारंटी कैसे मान सकते हैं? पहले आपने पैसों की गारंटी तो मानी नहीं अस्कानी भाई की, अब आप कह रहे हैं कि अस्कानी भाई मुझे ना उम्मे की गारंटी दें। भाई बात तो मामला तो उसी के पास है ना सारा, पीर साहब के पास तो है भी नहीं ना। मेरे पास भी है। लो ऑन करो गल। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, ये वाकई ब्लैकमेलिंग है और ब्लैकमेलिंग ये करनी है। और जिस औरत के पास मामला है ना वो मशहूर है काम में, वो मशहूर है काम में $10,000 एक बंदे का खा गई है, 5 एका खा गई है, 2 एका खा गई है, मेरे पास लिस्टें पड़ी हुई है। नहीं तो खुआन वाले बेवकूफ ने खुआन वाले तो खोने जब उन्होंने जान शिकंजे चाहिए होवे तो ਟੱਕ ਮੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। उमर साहब मेरी बात सुने, आप लोग सब समझदार हैं, नदीम साहब भी एक समझदार इंसान हैं, सब बेटे हुए समझदार हैं। जब इन्होंने कहा अल्लाह रसूल के लिए छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दिया। और आप जाएं उस भले इंसान को भी ये कहें कि आइंदा ऐसा भड़का ना मारे। आगे मैंने क्या कहा, उनकी मर्जी है मारे ना मारे, आप अपना हक अदा करें। देखो कितने इंसान भाई हम अपना हक अदा कर रहे हैं, आपके पास 2 बंदे हैं, हमारा एक बंदा है। भाईजान सुन तो ले। नदीम भाई एक मिनट जरा। अरे भाई पूरी बात सुन ले मेरी। एक तो थोड़ी गल ही लंबी हो जाती है, फिर वो भाई बहुत ज्यादा लंबी हो गई, सुन तो ले। मैंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ दिया मैंने। आप जाएं भले मानस इंसान को कहें आइंदा ऐसा बढ़के ना मारे। उसके साथ मैंने ये कहा वो आपकी बात माने ना माने, आपका फर्ज है उसको कहना। मैंने नहीं कहा कि आप गारंटी दो आइंदा ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा पीर अस्कानी भाई, एक मिनट भाईजान आगे की बात सुन लो, आगे की बात सुन लो। मैंने आपको जोर नहीं दिया कि आइंदा वो ना करे, आप गारंटी ले लें। आप मुझे ये कह सकते हैं कि भाई आपने छोड़ दिया, जज़ाकल्लाह, आपने मेरी इज्जत रख ली, आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपको ये कहना चाहिए और आगे ये कहना चाहिए कि आपने छोड़ दिया, शुक्रिया। उमर अबाब साहिबा को भी कहें और साथ में ये भी कहें कि भाई आपकी बात ना माने वो तो अलग बात है, लेकिन आपने उनको कहना है। हाँ मैं अपना फर्ज तो अदा करूंगा अल्लाह की रजा के लिए और कहूंगा, दिल से कहूंगा, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि गारंटी ले लो। मैं जब आपको ये वो नहीं कह रहा, आप मुझे कैसे कह सकते हैं? भाई किसी की गारंटी कौन कैसे ले सकता है? भाई हो सकता है किसी झगड़े में वो अपना मसला करे, लेकिन मैंने जो जुबान दे दिया, ये है इंसाफ। पीर अस्कानी भाई मेरी बात सुन ले। अब आप बीच में जो गारंटर आ रहे हैं ना, इसी वजह से आ रहे हैं कि हमें वहां से डिलीट चाहिए। मेरी तरफ से डिलीट हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया। नहीं आपकी बात नहीं हो रही, आपको तो मामला जिसके पास मामला ओरिजिनल पड़ा हुआ उसकी बात हो रही है।
उनको मेरा हक है अल्लाह की रजा के नहीं लिए। नहीं नहीं, हक नहीं होगा, आप ग्रंटर आ रहे हैं बीच में, ये बात गलत है। हक वाले कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मामला हो रहा है, आप बीच में पक्के हैं, किसी आपने गारंटी ये की करवाना जरूरत है। नहीं है, किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। उमेर रुबाब इसको कभी भी डिलीट नहीं करेगी, मेरे से लिख ले। बस यही बात है, ये नजर आ रहा, सबको पता है। अच्छा नदीम और भाई, वक्त आ गया, वो पीर अस्कानी को गालियां भी दे देगी, ये भी लिख लेना बात। पीर साहब पीर अभी जो अस्कानी आपने थोड़ा सा बात जोर की, दे, पीर अस्कानी थोड़ा सा जोर दे, पीर अस्कानी के खिलाफ ना होगी, मैं जूते खाऊंगा कैमरा ऑन करके आपके सामने। किताब और देखिए पीर मेरे अस्कानी भाई, भाई, आप नहीं जानते, ये बेलक्स नहीं है। अच्छा पीर साहब, जो बात आपने की है ना कि आप उसको कहेंगे, जी मैं बिल्कुल। अमन, मुझे इस मामले का कल ही पता चला है, और मेरी पहली दफा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ वो पप्पू बगैर की वजह से, अली भाई को उसने उतारा। भाईजान अच्छा आप गालियां तो ना दो ना भाई प्लीज। अच्छा, वो जो आपके बाद वो जो कुछ बोल के गया ना, वो भी आपने आराम से सुन लेना। देख ले पीर अस्कानी भाई, हम भी बात कर रहे हैं ना, देखो को गाली दे रहे हैं किसी को भी। फराज भाई, पप्पू भाई हमारे प्यारे हैं, आप ना करें ना। वो तो मैंने पता प्यारे है, यार, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ भी पता है खुदा दा इस खौफ खाया करो यार। ਗੱਲ ਕਰਨ दो यार एक मिनट। इसके बाद मैं- एक मैं- मैं मुझे- भी आज करने वाला हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी अमन नज़ीर के साथ कोई बात नहीं हुई। अगर मैं जाके अमन नज़ीर को बोलूँ या नदीम भाई जाके अमन नज़ीर को बोलें कि अल्लाह की रजा की खातिर आप जो है ना ये बात कह दें कि मैं आइंदा बढ़ के नहीं मारूंगा, और वो बात हमें इस बात का यकीन है कि वो हमारी बात मानेंगे, मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई, वो मान जाएंगे। लेकिन आपने जिसको बहन बनाया हुआ है, अगर आप जाके उसको बोलते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए ये मामला छोड़ दो, तो वो छोड़ देगी। चलें, बहुत अच्छी बात आपने की है, इसको आप सुनिए। देखो मैं किस तरह के इंसाफ की बात करता हूँ। आप जाकर भले मानस इंसान को कहो कि आइंदा आप इस तरह की बड़के नहीं मारेंगे जिससे जिल्लत हो हमारे इजमाई तौर पर, और वो रिकॉर्डिंग करा दे कि मेरा वादा, और ये वीडियो आप ऑडियो मुझे दे दें। मैं भी वादा करता हूं कि उमर रुबाब साहब को कहूंगा कि आप इसको डिलीट करें, उसको जोर दूंगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरा वादा है मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। बस इतना ही कर सकता हूं। ये देख लो, जाओ ले आओ ऑडियो। सौखा लगी था कि ठीक है पीर अस्कानी भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾ। नहीं मानेंगे किस मसले पे? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ अगर ਬੰਦੇ वो ਕੋਲੋਂ मेरी ਦਾਦੇ बात ਪੈਸੇ नहीं ਲੈਣੇ मानेंगे, ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। नहीं फराज भाई, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। अस्कानी भाई ਗੱਲ ਮੁੱਕ किसी ਗਈ तरह ना। नहीं ਗੱਲ मानेंगे। ਮੁੱਕ गई। तो वही पीर साहब ने गल की है, पीर साहब ऐसे नहीं बात होती। मैं एक अपने बिहार पे बात ऐसे करता हूं, बात कहता हूं, दिल बात से करने नहीं कहा कि उसका दिल बदल जो कि सकते आप पीर कहेंगे साहब। वही होती है ना, जिस तरह की बड़के मारे वही होती है भाईजान। मेरा उनके साथ बहन भाई का रिश्ता है। तो क्या आपको अपनी बहन पे इतना यकीन नहीं है कि वो आपकी बात अल्लाह, सुन तो ले, अगर सुन आप तो ले। उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल मेरे का भाई मेरी वास्ता बात दे और तो वो सुन बात ले ना माने? भाईजान, एक तभी बात है, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे भाई इंसान का भरोसा नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं उनको अब मेरा कहने का फर्ज है उनको कहूं कि ऐसा ना करें। अब मुझे उम्मीद है कि बात मान जाए, लेकिन आपको एक गारंटी ले लो। तब बनती है अगर जैसे हम और आप बैठे हैं तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई इंसान की बात का भरोसा नहीं है। जब आपने उसको अपनी बहन बना ली है और आपकी बहन है वो, तो बहन भाई के बारे में इतना बंदे को ये बात कि मेरी बहन का मुझे भरोसा नहीं है, ये बहन बात भाई में फंदा हो नहीं सकता है। है। पीर अस्कानी भाई, अपने बच्चों का भरोसा नहीं होता क्या करेंगे? पीर अस्कानी भाई, रब्बे किसी का काबा की भरोसा नहीं कसम होता है, भाई। मेरी क्या बात सुन कर ले। रहे हैं? पीर अस्कानी भाई, रब्बे काबा की वीडियो कसम है, लेकर आए। आमर भाई के साथ आपको पता है इस मौजू पे हमें वैसे ही बात नहीं की कभी ना, हमें वो करने देते हैं इस चीज की, फिर भी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है ना। और उम्मीद है हम वो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर जहाँ पे आ जाए वहां पे सब कुछ कुर्बान हो जाता, खत्म हो जाता है, जी ठीक आपकी है। चाहे बहन वो अल्लाह 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 हो, के चाहे रसूल वो की जिद हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपकी तरफ से ये क्यों नहीं हो रहा? भाई मैं तो आपको मैं जज्बाती ना हो, उम्मे रुबाब कभी डिलीट नहीं करेंगी। सीधी बस टाक मास्टर भाई बात यही है, जो सच्चाई सच जो है वो यही है, इसमें कोई शक ही नहीं है।
पर उसमें पीर अस्कानी का क्या कसूर है ये बताओ। तो पीर ਪੀਰ अस्कानी ਅਸਕਾਨੀ साहब ਸਾਹਿਬ बंदे आते क्यों है नहीं ਤੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਮਸੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸੂਦ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਪੀਰ ਸੁਣਦੇ अस्कानी ਪਏ ਭਾਈ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਰ आसकानी भाई ਅਸਕਾਨੀ से ਸਾਹਿਬ इसलिए बात कर रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, और अगर इन्होंने वो उमर बाप से बात की तो उन्होंने निकाल देना बाहर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਸਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋਲ मास्टर ਵੀ जी है। मैं खाने पे जा रहा हूँ, आप जरा 10 हाँ, मिनट मेरा खाना वेट खाइए कीजिए आप। प्लीज। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਸਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਸੂਦ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਵੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮਰ ਬਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਪੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਤੋਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕहीं ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲ ਫੱਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸ ਨਗਰੀ ਸੇ, ਕਰਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੀਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਆਓ ਤੇ ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਉਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਰੱਬੇ ਕਬਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਅੱਗ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਨੇ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਅਲੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਬਾਕੀ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਟਾਗਮਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ। पप्पू बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी पप्पू। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਭਾਈ 33 ਸੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਛੜੇ ਜੇ। ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 33 ਸੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਯੂਰੋ 1 ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਕਬਰ ਭਾਈ। हाँ जी। ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਰਾ ਨੇ 1 ਡਾਲਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 33 ਸੈਂਟ ਪਾ ਦਿਆ। नहीं वो मैं उन्होंने क्या कि मैं देना नहीं है, मैं पाना में पाना। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਛੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ 30 ਸੈਂਟ ਪੁੱਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਚੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ 30 ਸੈਂਟ ਪਾਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ ਵੀ ਉਧਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਛੜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚੰਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ, ਦੜਾਨ ਖਲੋਣ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੜਾਨ ਖਲੋਣ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਚੰਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ मुसलमान ने, बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, ये गल वाकई ठीक है कि जब कोई अहमदी फोत होता है तो अल्लाह ताला उससे 2 बातें पूछता है कि तबलीग की थी, चंदा दिया था। अगर अहमदी जवाब दे कि मैंने तबलीग भी की भी दस सकते हैं, सानू नहीं कि मैंने तबलीग भी की थी और चंदा भी दिया था, तो अल्लाह ताला कहता है जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੱਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੱਲਾ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। गैर हतमी नताइज। हाँ जी यार, मैं कहना है उमर फराज यानी कि हले फैसला रोले ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। मैं कहना है कि उमर फराज भाई ते नदीम भाई जाओ तरला लगो मेरो बाप दा, बचा लो भाई। मेरी गल सुनो, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪੀਰ ਅਸਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਚ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਫੇਕ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਫੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਆਹੋ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਐਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਦज्जाल ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵਾजिबुल कत्ल नहीं है। नहीं, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਵਾजिब ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਫਰਾਜ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾजिबुल कत्ल ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਪਤਾ ਨੇ ਲੱਗਾ। ਆਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਅਗਰ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ और अगर सियालवी साहब कहते हैं कि अगर उन्हें दावा किया है तो ये वो तो लानत ये तो वो ना वो वाजिबुल कत्ल है भाजी। और सब तो पहला हक फिर सब तो पहला हक कत्ल करन दा सियालवी साहब दा अपना लिखिया किथे वे, किथों पढ़ के दसन दे? ये सियालवी साहब को भी पूछना जरा जाके। ਟਾਸ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। अच्छा हुण उमर फराज भाई ना मेरे को पुछ के ते ये दसना चाहते जी मैनूं ते पता ही नहीं, तुसीं मैनूं दस दिओ जो वाजिब कतल है कि नहीं है। ये देखो इन्हां दा पता की ये मैं तुहानूं दसां सियालवी साहब दे कोल शायद अगे भी कोई इंटरनल स्लिप कोई अल्फाज होए सन दा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਨ ਆਫ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਲੱਗ ਜੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਮਰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਬਸ। ਸਾੜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਦਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਟਾਕਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਡੀਓ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਡੀਓ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਅਲੀਮ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਅਲੀਮ, ਪੈਸੇ ਅਗਲੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 1 ਮੁੱਤਾ ਕਰੋ, 2 ਕਰੋ, 3 ਕਰੋ, 4 ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਹਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮੇਰੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕਸ? ਜਦੋਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਨਹਾਣ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ $10,000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੈਕਅਪ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਦੇ ਇਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਮੁਫਸਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਉਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਚਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ $10,000 ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਸ ਨਾ ਬਜੇਗੀ, ਕਫਨ ਪਾੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ $10,000 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ $10,000 ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ $10,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ $10,000।